इतना सा फर्क है कुछ होने में और बहुत कुछ होने में। इतना सा फर्क है एक बार सोच के छोड़ देने में और लग के कर दिखाने में। मान लेने में कि जिंदगी ऐसे ही कटेगी और सुबह 4 बजे उठ के सोचने में ये अभी तो बस शुरुआत है। किसी मैगजीन को हाथ में लेने में और उसी मैगजीन के कवर पेज पे होने में इतना सा ही तो फर्क है। वीआईपी सीट में और उसकी पिछली सीट में इतना सा ही तो फर्क है। वो जिसका मैदान ही खुला आसमान है वही कल जमीन पर तो था। पूछोगे तो बताएगा वो पंछी कि एक दायरे में सिमटने में और पूरी दुनिया को दायरा बनाने में बस इतना सा फर्क है। इतना कितना है? इतना है या इतना है? जो नापेगा वो जाने कि जहां धरती और आसमान मिलते हैं, नानकुर से दूर, अगर मगर शायद से दूर, वहां भी दोनों में फर्क बस इतना सा है। धरती और 7वें आसमान में फर्क बस इतना सा है। ये एक अंतर प्रेरणा है। ये हमारी, आपकी, हम सब की अंतर प्रेरणा है। एक कदम, एक छलांग, एक बाजी, एक गहरी सांस और एक ललकार खुली हवाओं में कि हाँ मैं बना हूं उन फिजाओं के लिए, कि हाँ मैं बना हूं उन ऊंचाइयों के लिए जो ऊंची तो बहुत है पर नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन में बस इतना सा फर्क है। धूप छांव में फर्क बस इतना सा। तो बस चलिए फ्रेंचाइज इंडिया के साथ ये फर्क मिटा देते हैं। फ्रेंचाइज इंडिया, 20 years of ideas. A very good afternoon to each and everyone who has joined us today for our webinar series. I, Archana Sharma, along with the entire team of Franchise India, welcomes each one of you to our weekend series. We also welcome our brand representative who have joined us today to showcase their brands for the day. We also welcome and invite management team of Franchise India, Gaurav sir and Sonia ma'am. During the course of the webinar, they'll be sharing their insights with each one of us so that we can take the proper decision, correct decision of selecting the right franchise. Today is Saturday, and Saturday is always very special for us because we try to bring the different opportunities under one vertical. And today we are bringing low cost opportunities, different brands, so that you get correct and complete understanding about each brand and take the right decision. With this introduction, may I welcome and invite Sonia ma'am to talk about the great initiative which we have taken under our Advantage program. Thank you so much, Sonia ma'am, for joining in today. Over to you, ma'am. Thank you so much, Ashna, and a very good afternoon, friends. All of you have joined today on the Saturday series. And this is the weekend series that we do every Saturday. And this is a virtual show that we bring opportunities which are either based on the industry at large, business formats, or investment. And hence today we bring to you low investment opportunities which have been categorized. And there are many industries that we bring including franchising and distribution opportunities. And these opportunities would start as small as say 2 lakhs plus kind of an investment. And Franchise India, friends, has played a very important role and being a catalyst in the franchise industry. We've always believed and acted in a manner that it could boost the spirit of entrepreneurship and most importantly through responsible franchising. And this was the idea behind these webinars. And we started democratizing the knowledge base where we have to ensure that we empower every business buyer with enough knowledge, not just to take a decision of buying a business, but important to take an informed decision, a very well informed decision. So I like to piece together some advice, when you select a business, and it's important to find most important what is right for you. There are many opportunities which are presented, but most important that you evaluate what is appropriate for you. And when you make a choice of a brand, you must ensure and diagnose yourself, your own entrepreneur spirit, your life and business goals. Second, you assess the industry that you want to enter.
Third, assess the market dynamics. Fourth, which is competition, which is very important. And finally, the brand that you choose. There is a lot of in-depth understanding and insights that you need to gain on all these five parameters. And second, I would also urge, a lot of franchising, and especially a lot of opportunities which are presented in franchising. These are opportunities which require a lot of your time and effort to be involved in the business, because it is an active investment. It is not a passive investment, so to say. So bring your time, and it is this time that brings maximum efficiencies in the business. And I will also, add, it is important in these times, be sure of whom you're dealing with. There are people who might call you as Franchise India consultants, or might want to present you something which might look like being presented from our company. So ensure whom you're dealing with, and especially when it comes to monies, ensure where you're transferring your monies. And if you're dealing with a brand, it must be the bank account number. And we also caution not to deal in any kind of cash monies with anybody in these times. And at the same time, I will also talk, because and there's some brands which everybody sometimes asks for. Their companies like McD's, even Domino's, and many of these companies don't sub-franchise. They're all franchise companies in India through a master franchise, but many of these companies don't franchise. And there are some investors, I had happened to interact with them, and they were spoken by some consultants that they can get you these franchisees. So educate yourself enough on companies who can franchise, who are franchising, and only then take a decision of selecting and buying an opportunity. And as far as this iAdvantage program is concerned, our teams at Franchise India, our advisors at Franchise India, including our independent franchise consultants, they're all available in all the top 85 cities of the country to reach out to everyone, to give you personalized and guided assistance in finding an opportunity. So through this program, you can use our services, which can extend or maybe start from a period of 6 months and can extend to even a 12-month period. And now I will also request Mr. Mare, who's chairman of the Franchise India Group, also to address everyone. And he will also inform on some of the initiatives and events that we are doing these days, and some that will start maybe in a week's 10 days time. Thank you very much. Thanks, Sonia. We are very welcome, friends, and welcome to another weekend edition. This weekend edition is actually bringing multiple brands to you. And that's our endeavor at Franchise India. We continue to bring in more and more opportunities. I'll not take too much of time. I would like to pass it on to our panelists, because your time is valuable and we have to cover many brands in today's session. I'll only leave you with the thought process that if you're making a decision, always connect these 4 dots. One is what industry you want to make an investment. Don't look at a short term, look at a long term viewpoint on that industry. Second, the brand you're making a choice. Why are you making the brand, that particular brand as a choice, or why, in terms of the foundation of the company, their background, their past performance, their existing franchisees, all that has to be really seen. Understand a little bit of a competition also who are available in that same space before you take that decision. Third is your financial goals. What is your financial goals? What do you expect from that business? And fourth is your micro market, which market you are starting. What is an opportunity for that industry and that brand available? So take a wise decision. As Sonia said, always don't really rush into taking a decision. Take a wise decision. Work with a good consultant and a mentor, and always participate direct negotiation with the brand owners, because they are also available with you to give you all the answers which are required. And that's why Franchise India has believed last 23 years into creating this transparency. We transparently go out and represent all these brands, so they're able to really interact directly with you. So use this show to ask a lot of questions. Go into a Q&A box down at the bottom. You can see a Q&A box. You can ask your questions there, and we'll be more than happy to take your questions. Also, there is another show which happens 7 o'clock every day in the evening, which also are multiple brands. And we're launching a very big program, which is starting from 1st of June, which would be the Bharat Franchise Show. This would go to 100 cities in India. It's a phenomenal show. And we have, probably the biggest network expansion we are going to be doing and reaching out to almost all major cities of India. 100 cities are we covering in 100 days. So great show coming up, 7 o'clock to 8:30 every evening,
starting from 1st June. So over to you, Archana, for introducing our first panelist. Thank you so much, Gaurav sir. Thank you so much, Sonia ma'am, for welcoming all our guests. The first brand which we are delighted to represent in front of each and everyone who has joined us today is Talbot Foods. It's a leading facility management and sanitization brand which has pan-India presence. They are known for their professional services and safety products. And I welcome Mr. Harsh, who is a founder of this brand, along with his entire team, Mr. Manu, Anupam, and Saurabh. Thank you so much, team of Talbot, for joining in today. Over to you. Thank you very much, Gaurav ji and Sonia ji. It's always been a pleasure working with you, and we've had a phenomenal franchisee program run since the last year, since we've initiated it. Thank you, Archana, for the introduction. Hello, friends. Hope you are safe and sound with your family and friends during this unprecedented time. And essentially, obviously, all of us have had to evolve our business model to suit the needs of the hour. And our franchisee program, particularly for our business, facility management, has been able to create a fairly pandemic-proof business. And in spite of the first wave and second wave, the company has been able to grow tremendously. And during the 1 year we've had this franchisee program, we've also been able to create a lot of value for our franchisee partners. And I'm delighted to be here to share that with you. If we talk today about the facility management industry, it is a mammoth subject globally. And this industry is worth more than close to about $2 trillion if you look at from a global point of view. But in India today, it is just about $26 billion, which by itself is more than 2 lakh crores as we look at it. And this industry is speculated to grow massively because the major trend that is happening in this industry is that a lot of work is actually moving away from unorganized players to organized players. And Talbot Foods, being one of the front runners in the organized facility management space, has a lot of opportunity ahead of it. In the most simple form, facility management is nothing but deploying a set of blue-collar staff like security guard, pantry boys, housekeeping staff, production services staff, and combining it with a lot of automated machines and gadgets, along with software-based solutions to manage the entire facility, whether it's a commercial building or a residential building, or in today's time, as I call it, the pandemic-proof sectors, healthcare, pharma, warehousing, manufacturing, which in spite of the lockdown restrictions has been running 24/7 throughout, requires a lot of facility management support. And obviously the industry has been growing tremendously, largely on the account of not only the fact that a lot of organized work is moving towards this sector, but a lot of players now prefer organized players because COVID has ensured people want hygiene and sanitization. No longer can this subject be ignored. And with increasing mechanization and technology, we are very certain that this industry is not only great for us, but is also a great selection when we think about looking at choosing a pandemic-free sector. Next page, please. In a nutshell, Talbot Foods has been able to create a mark for itself in a very short period of time. As we speak today, we are present in more than 17 cities, crisscrossing almost the entire length and breadth of the country. Today, we cover more than 1 crore square foot, which we manage by ourselves. And we employ more than 3,000 employees across the 200 clients that we have. And we have a fairly large service line, which not only covers the industrial and the commercial sector, but also has a lot of sanitization and disinfection service lines, which obviously is the need of the hour. And our demand has spiked up tremendously there. And in addition, we also have a suite of home care services. The company today is backed by SmartWorks, which some of you might have heard of. I am the co-founder of SmartWorks. It is India's largest managed office space player. And it is obviously featured amongst the Sunicorn companies as well, because the company has been able to grow tremendously. And about a year and a half back, it was able to successfully raise more than 200 crores from Government of Singapore backed company Keppel Land. And Talbot Foods is also moving in similar lines. Next slide, please. I'll just hand it over to the CEO of our company, Mr. Manu Sethi, to walk us through the rest of the presentation. Thank you. Yeah, good afternoon. Good afternoon to all once again. Thank you, Harsh.
Just to cover the characteristics and what is in it for you all, briefly, we have covered it in 5 pointers. As Harsh earlier mentioned that, as we speak, we are already operating in over 17 cities, managing about 10 million of square feet with about 250 clients in our portfolio already. On to the tie-ups, which is the backbone of this industry. It is important for all of us to understand and know that we have central level tie-ups with top 3 chemical companies of the country and the world, which is Diversey, Bozil Rosari, and Ecolab. Apart from that, we have a central tie-ups with all the equipments and OEMs manufacturers. They typically supply the equipments of housekeeping and other gadgets, IPC, Roots, and I-Team. Followed by our clientele, just a glimpse of clientele if we can see on the screen. By and large, we have clients across all the walks of segments, which I will cater to in the next slide as well. Apart from that, we have close to about 20 plus facility management service lines and business lines, which involves manpower contracts related to housekeeping, technical services, security services, and office administration services. Apart from that, disinfection services and sanitization services is something which is again picked up ever since we have seen the second spike in the cases. Followed by the quality standards, as a company, we have implemented successfully all the ISO certifications 9001, 14001, 18001. Alongside, we use chemicals and consumables which are in line with FDA, with the processes which are in line with the US-based organization CDC, Center of Disease Control. Apart from that, since the fact that we deal in manpower industry and blue-collared staffs, training and development, learning and development activities become the spinal of this industry. We ensure that we spend a lot of time for our workers in client premises, to train them periodically, both in classroom sessions and in practical sessions. Alongside, we have an array of digital platforms and technologies which we will talk about, but all of this technology and mechanization will be made available to all our franchisee partners. Talking about our clientele, as we mentioned earlier, that we have clients across all the walks of the segments, ranging from corporate, industrial to production support, which has become one of the major sectors today for us. And as we speak, it is absolutely the pandemic-free sector for us. A company like tire plant like MRL or a Amaya Foods company, which is a Marico limited company, group company, we are doing and rendering production support services, which is right across the country to government sectors. Warehousing sector is something which is, again, it never shuts. And we have seen a very high traction in players like brands like Grofers, Dynamic Logistics, etc. Followed by residential developers, commercial developers. We have a lot of enterprise and educational institutions with us, namely Allen, Tata, IBM. Allen is one of the largest coaching institutes across the country. We have deployed close to about 500 people in Allen alone. Followed by BFSI sector, which is again a very, very important sector, which we have seen a traction in the last few months. Healthcare sector is something which we have picked up very, very aggressively, and we feel that it's, it doesn't have really any impact, and in fact, impact due to the COVID. And we are doing some of the biggest and largest hospitals and pharma companies like AIG, Dr. Reddy's, and TX hospitals. Onto the service lines, we have close to about 20 plus facility management services which we are offering to our clientele and to our franchisee partner, which is ranging from manpower services to sanitization services, home care services, building upkeep and property technology. Largely, we say that the top 3 rows, manpower, sanitization, home care, which is related to the housekeeping, technical, security guarding, and sanitization, which is essentially pest control and disinfection services, along with home care services, deep cleaning and carpet, and antimicrobial services, is something which we promote very, very aggressively to all our franchisee partners. And we also recommend a certain amount of mix when our franchisee partner avail the franchisee and start the business with us. We always recommend that, there has to be a mix of 70:30 between manpower and sanitization services.
Alongside, obviously, Talbot today is at the cutting edge of technology. Not only do we deploy a lot of machinery, which is tied up with some of the world's leading companies, but one of our major differentiators today is that we've been able to create a lot of software-based solutions, which makes the entire blue-collar segment, which up until now did not see a lot of technology intervention, very tech-friendly. For example, we have a smart washroom solution, which ensures that this washroom smells well throughout, and we intervene in case there is any support required. Through our ERP system, we are able to not only onboard the blue-collar staff and verify them through Aadhaar, but also manage their payroll and compliance. And all of our franchisee partners obviously gets access to all of this proprietary technology that we have been able to build in such a short period of time. Next slide, please. So just now shifting gears to the franchisee program, it's been a phenomenal run for us. It's just been less than 9 months, but we've been able to onboard more than 15 plus franchisees in our network across the length and breadth of country, starting from Chandigarh to going to Northeast in Guwahati, to the central and west region where we cover Gwalior, Bhopal, Ahmedabad, to cities in south which include Hyderabad, Bangalore, Chennai, where we already have a lot of presence. And given that these cities have such massive opportunity, and this business requires largely a lot of relationships, which all of you have either through your old employers or through your family or through the personal network that you've been able to build, which can be monetized to actually generate work. Because in this industry, what we've seen, quality of service and relationship are the only two things which matter the most. And I will now just quickly show you a very brief video, which will give you an overview of the overall program. Talbot is because of their detailed business plan they showcased to us. Once onboarded, they had a very well-planned induction program. We are very positive that this is going to be a profitable venture for us. Thank you. For the past 10 months, the journey with Talbot Force has been very fruitful and exciting. We were able to grab clients that we couldn't in the past. They've been very supportive. The team has been very motivating and encouraging to us since day one. Some of the clients that we would gather were Sai Surface Coating, Purva Summit, and some of the residential complexes that we did in the past. We're very proud to be part of Talbot Force and very proud to be the franchisee partners for Hyderabad. Looking forward to many more fruitful ventures in the future. We have acquired good number of clients like Allen Institute, Bank of Baroda, Indian Bank, Connect to Business Solution, and FedEx. This is the wonderful company with dynamic leadership and excellent vision for the future. So this entire program today is a very low cost opportunity, and we realized during this pandemic time, everyone is looking for opportunities where the investment levels aren't as high and we are able to create a predictable cash flow. The beauty of this business is that we are able to today, through a very low investment route, create a monthly recurring income, which really differentiates the industry. Imagine today if you had 5 lakh rupees to invest. Today, if you were to deploy it in a fixed deposit, earlier the rates were as high as 8 to 9%, but today it's coming down. Even at a very high rate of 6%, you will be able to generate about 30,000 of interest income. But in our business, because you are able to invest this money in a month and get the return back within that same month, the same business
even at a very, very conservative 6 to 7% management fee, which you incur on top of the billing, you will be able to generate more than 6.8 lakh rupees throughout the year, which represents a high ROI, which is 36% higher, and ensures that once you've invested, you on a month-to-month basis, almost like interest annuity, get something every month, which ensures that you have predictability in terms of cash flow. And this business obviously is highly scalable. The moment the investment increases from 5 lakh, which obviously the brand would also be happy to support you and invest in a manpower contract or a facility management contract, the business can be ultra scalable in a very short period of time. Next slide, please. I'll just quickly cover the franchisee business is a very low investment, high return business. Obviously, the investment recovery is in less than 6 months. The capex that you need to put in initially is a fairly moderate level, and you can go live right from day one. What we've been encouraging a lot of our partners, especially in the aftermath of the second spike, that a lot of business opportunities are open up. You please focus on getting the business. Talbot is here along with its sales team and along with our operations team. We will take care of all the execution while you focus on sales and marketing. And we foresee that within a year, the business has a potential to scale up to more than 1.5 crore in terms of turnover on a recurring basis. And I will hand it over to our CEO to cover a few case studies as well as document the type of support that we will be providing during this entire franchisee journey. Anupam, you can move to next slide. Onto the support front, there are basically 5 sort of major supports which we render from our central location. Talking about HR and recruitment support, right from your hiring needs, of our blue collar people, which ranges from unskilled category to semi-skilled category, or maybe a sales manager, in due course of time, you would require to have it in your system. All of that support will be rendered from our side centrally. In terms of technology, as we mentioned earlier also, all the available platforms, digital platforms, and all the softwares, as an organization, we are a ERP managed company. All that will be made available to you and eventually to our clientele through you. On the third part, which is related to sales and marketing, which is the primary engine for this program, I would say. One is that, we assist our franchisee partners in materializing any and all sort of contracts and businesses throughout. So all our franchisee partners will be supported by our region's sales lead, who will be then connected with you and your team on a day-to-day basis to monitor and to see that, most of the contracts and opportunities are converted. Apart from that, this business requires a lot of activities wherein we have to really go out and reach out to the customer at times. So we do a lot of calling activities centrally from our HO location, onto the qualified databases, eventually generates lead and pass it on to the respective territories. Apart from that, there is a central program onto the leads generation process, which happens regularly at a HO level. And that eventually gives us a lot of disinfection and sanitization, deep cleaning opportunities for our partners. Onto the operations and execution part, as we mentioned earlier as well, that, we have a very, very robust operations team and execution team in all the cities across the country, in 17 cities. And we encourage our partners to focus on the new acquisitions, to exercise the associations and connects what they have in the market and in their corporate world, etc. And there is no hassle to be taken, particularly on the operations and execution, because initially we will support all our franchisee partners for such executions. And the last, which is not the least, is the training and development. As I mentioned earlier also, that this industry involves a lot of training needs on a regular and a periodical basis. The fact that we deal with the blue-collar employees, we run a continuous skill development programs, not only for our blue-collar employees, but we also do continuous sales programs, sales training for the sales people. We do a lot of OEMs trainings, particularly from the IPC, particularly from the OEMs like IPC, Tasky, and Diversey, etc., to support our franchisees from time to time.
here are some couple of success stories which we will quickly bring it to you. Our franchisee who's based in Bangalore, this is how it looks like. He started in the first month, they set up the shop. He was inducted successfully into our system. Recruitment of staff happened. All the equipment supply, etc., happened. In the second month itself, he was assisted by a central team, wherein we allocated a national disinfection account, HDFC Bank in Bangalore for the region, and he started executing on his own. Month 3 largely went in a lot of planning and considering that we'll have to ramp up our network. Related to manpower, etc., etc. And if you see in the month 4, this our partner was able to bag a production support contract like Amaya Foods in Coimbatore, Ponpure Chemicals, etc. in Bangalore, and he could ramp it up with 2 production support contracts largely. Month 5, we again allocated a national disinfection client of ours, which is Allen for Bangalore region. And in totality, if you see today, he's sitting comfortably on a top line of about 3 crore annually, wherein he's making a bottom line or a margin of close to about 90,000 or 1 lakh rupees on a monthly basis. And this is just a plan which has been showcasing for last 5 to 6 odd months. If you can just move to the next case study. This is in fact one of our most successful, earliest successful franchisee partners in Ahmedabad. In a span of about 3 to 3.5 months, he could actually ramp up, and we could actually together mark the presence in Ahmedabad region through our franchisee in most of the sectors. As you're seeing that, he's now serving a growers in warehousing segment. He's managing a client in commercial building, office building, which is Icon. He's also managing Allen Institute, which is an educational client. Plus, he is now backed up recently a hospital in that. So 4 or 5 segments he could cover in a span of 3 to 4 months. And he's comfortably sitting at a annual turnover of about 2.4 or 2.5 CR, wherein he is actually making close to about 60 to 70,000 rupees profit every month in a span of 3 to 4 months. With this, I think we would like to call upon all the like-minded franchisee partners, who like to grow the business collaboratively with us. And I would hand it over back to Harsh for the concluding remarks. Absolutely. Thanks a lot, Manu. And thank you everyone for your valuable time. It's again a very tough time, and business models all need to evolve. And what we have seen a lot of success over the last year has been how Talbot has been able to make a pivot to make a business model truly pandemic proof. And in spite of all the restrictions imposed, keeping the environment safe and hygienic, we've been able to scale up our business in a very low investment way. And we've been able to create a lot of value for our franchisees. We feel anyone who has strong relationships on ground and has this drive to run and hustle, we are there to back you and provide you all the support, whether it's investment or our sales team or our operations team. All we look for is like-minded people to work with us to scale up, because the opportunity in this sector is phenomenal. And for the next few years, this sector will continue to grow at its rapid rate. Thank you very much for your time. Thank you so much, Harshi and Manuji. And friends, just to add on to the entire opportunity, Talbot has an integrated facility and they provide the facilities which has the ability to meet the diverse facility management requirements for the entire spectrum of clients, which can range from SMEs to even big corporates and companies, and they have been managing that for the last many years. And as you've seen some of the case studies, and these are mostly the clients which have come on board, I would say in the last 8 to 10 months of time frame. So this is a business, which is more, I would say, a volume business. So which means you need to have the initial 1.5 months in acquisition of your client base. And then this is subscriber business, wherein every month you will have your database or your clients who would keep taking these services. And Harshi, quickly, I'd like to maybe just pick one question. I think the rest of the things have been explained. Maybe the important markets, if that can be something that you can talk about. And also because, you've talked about how you've helped your current franchisees. And when a new market opens up, or maybe in the existing market where you have business, what are the potential markets and what assistance would there be from the company when it comes to go to market for a franchise partner?
Absolutely. No, thanks a lot, Sonia ji. And it's been a wonderful journey working with Franchise India, since the last year, and the program is run very successfully. Thanks to your support. Now, what is broadly, answering the second question first, in terms of support, we provide a 360-degree support, which Manu had earlier covered, but I'll just summarize it very quickly. That number one, when it comes to sales and marketing, we will be affiliating one senior sales resource with you, who will be ensuring that all the quotations, proposals, and discussions with clients is basically done in a very formal manner to ensure you get the support. Our operations team on ground will be ensuring that all the recruitment of blue-collar staff is done in a timely manner, and they are trained on a very, very regular basis. And obviously, we will make you comfortable in terms of managing the blue-collar staff and then hand it over a period of 3 to 6 months. In addition to that, we obviously provide you all the access to the technology products as well as the ERP system that we have. And recently, we've also launched a very attractive rewards and recognition program for all our franchisees, because some of them have been able to do extremely well at clients like FedEx, LiveSpace, etc. So we found it very useful to sort of reward and make sure that they are incentivized. So your opportunity is not only the monthly annuity income, which you will be earning, because again, remember, once you get a contract, that contract generally lasts for 12 months. So every contract that you take off, let's say for 5 lakhs, for example, is almost translating to a turnover of more than 60 lakh. In addition, the final support that we are also providing to our franchisee partners is that in case they would not like to invest beyond the initial quantum and they would like us to invest in the client contract, we would be happy to do that as well. In terms of regions, what we've seen over the last year is that a lot of tier 1 cities have seen a slight contraction in terms of a lot of office goers not coming to office. But at the same time, we've seen a lot of demand pick up in sectors like warehousing, pharma, hospital, which basically has a lot of penetration in tier 2 and tier 3 cities as well. So while the tier 1 sector, obviously, just because of its size, remains very attractive, and we feel multiple franchisees can exist in a large city like, for example, like a Bangalore or a Hyderabad, because the market is so vast. And this is again very, very relationship driven. But we would highly encourage, tier 2 and tier 3 city participation as well, where you have a lot of manufacturing facilities, warehouses, and pharma facilities, because these businesses will thrive in the next 2 to 3 years. And all of them are facing acute shortage of facility management staff, along with obviously sectors like Grofers, Swiggy, Zomato, which obviously all of you are using. Even you are seeing a lot of shortage of delivery boys, etc., which we also cater. Thank you. Hope that answers the question. Absolutely, Harshi. And one more question which I'll pick. We have Mr. Rahul. He wants to connect with you and the team, and we'll our team at Franchise India will facilitate that call with Rahul Verma. And there's a question from Mr. Vinod, who's asking on the number of people that would be required at the start of the business. So we generally don't recommend hiring too many people to start the business. If you are an entrepreneur yourself, you can essentially be a one-man shop with one more admin resource who will provide you support in terms of accounts and operations. But obviously, where we've seen very good results come is if the franchisee is willing to invest in at least one basic sales resource, who might not be a very expensive resource, but a team, that sales resource is in constant touch with our central support team, and you will be able to drive and get much better results if you have a small team. But having said that, you can start the business by yourself as well. And gradually, once the business volume starts picking up, you can hire more. But obviously, if you want better results, then we recommend at least hiring one sales resource and one basic support staff. But you don't really need an office. You can work from home. And essentially, the business doesn't really require a lot of intervention and day-to-day visit at office. This is completely work from home. Thank you so much, Harshi, for being with us on this webinar. And we'll try and take any questions from the audience that we might also receive. And we'll help all these investors connect with you maybe in the coming week. And we'll also write to them for a time that we can fix with you. Thank you so much, Harshi and Manuji, for being with us. Thank you very much for the opportunity. Thank you. Thank you. Thank you so much, team of Talbot, for joining in. Our best wishes with you. Thank you so much. Now, the next brand which we are representing in front of each one of you is Chirag Dil Biryani. And we invite Mr. Atulji, who will be sharing business ideas with us. If I talk about Chirag Dil Biryani, they are promoted by Akriti Food, which was established in 2006, primarily for export of ready-to-eat food. And today, they are talking about their exclusive Dum Biryani brand, Chirag Dil Biryani. Thank you so much, Atul sir, for joining in. Over to you.
सर आप म्यूट पे हैं। अतुल सर रिक्वेस्ट करेंगे आप। Good afternoon, ladies and gentlemen. I am A.K. Kohli from Chiragdin Biryani. We are offering Dum Biryani franchise to Pan India. Actually, in organized sector, there are very few players available, and mostly they are not providing the franchise also. Since we are in the food line since 2006, so we have a European technology to preserve the biryani and all, and our proposal is for a chefless model in which franchise can have a small shop for the takeaway and the delivery. Next, please. We are offering simply the 15 varieties of dum biryani in clay handi, and it is a chefless model, zero wastage of biryani, and we preserve the biryani in pouches with the use of latest Western technology. And the franchise has just to heat and deliver it. And it is a very low cost model. The franchise need is simply the microwave just to heat and deliver. Everything will be provided by us. Our USP is chefless model. You need only 2 unskilled persons. There is zero food wastage. And food is prepared from our cloud kitchen. And we offer clay handi. And you can join us with a very small investment. Next, please. We are using a European food processing technology, and it is freshly made biryani in our cloud kitchen, and the shell life of our biryani is more than 1 year, and it can be stored in a room temperature, and it is very hygienic. Next, please. For you, you have to simply heat and deliver the biryani in clay handi, which will be provided by us. And the ROI is almost 10 to 12 months. And if you have a small shop, so that you can have a takeaway and delivery model also for this biryani. Our business model is unit franchises, multi-unit franchises, and cloud master franchises. Presently, I am focusing on unit franchises. For unit franchisee, the investment is less than 6 lakhs, and the ROI is 10 to 12 months. They need simply a small shop of 100 to 120 or 150 square feet with a signboard of our brand, so that they can just heat and deliver through agitators, through their or contacts. We will also provide digitally marketing support to our franchise in the area. Next, please. So this is the financials which I have already told you, that in unit franchise, your ROI is in between 10 to 12 months, and there is a zero wastage of biryani, because you will get the biryanis in the pouches which can be kept in the room temperature, and you have just heat and deliver in the
clay handi. Next, please. These are again the franchise which I have already explained. These are in details how we can get the ROI in 10 to 12 months with all the expenses. How to order? Simply, you can order it through our website, which is well established. You can order from aggregators like Zomato or Swiggy, and you can also have your own delivery through your own promotion in your own local area of your area. Next, please. As far as industrial overview is there are 3-4 brands in the biryani, but nobody is giving the franchise. All are in unorganized sector. We are only the brand which is giving the franchise, and I should not boost myself, but it is better than all, and it is in the clay handi, and it will be totally hygienic in comparison to all. Next, please. Again, these are the certain brands: Biryani by Kilo, Behruz Biryani, Biryani Blues. Otherwise, there is no big brand in this segment, and it is a complete food. And data shows that in the last 1.5 years, biryani is the most sought food in India. Next, please. These are all, again, growth opportunities, retail and cloud kitchen. You do not need any chef. You need only 2 unskilled persons who can simply heat the biryani packets and deliver in the clay handi. So there is no need for any technical person, and there will be a zero wastage. Next, please. This is ideal unit franchise. You must have the zeal for the enterprise, interest in the food industry, and you have a local demographic knowledge of your area, access to the required capital, and it is preferred that you must have a small shop with the brand name, so that you can sell takeaway as well as delivery also. Next, please. So in nutshell, it is a very low cost franchise model, and it is pre-cooked packets of biryani. You just have to eat and deliver. Every material will be provided by us, and we will support you through our app, through our website, and we will assist you in getting the Zomato and other aggregators contracts. And you have to simply promote yourself in your own city, and we will also support for your area digitally also. If you have any questions, you can ask. Thank you, Atulji. I'll take maybe one question, and maybe just to sum up the business model. This is a biryani brand from Delhi, and the product life is big, which means that it can be shipped anywhere in the country. And I think Atulji, आपका शायद 1 साल का है shelf life. It is more than 1 year, and it can be shipped through local transport in the corrugated boxes, since it has to be kept in the room temperature. Hanji.
सो फ्रेंड्स ये रूम टेम्परेचर का है एंड इसमें तकरीबन जो आपका सारा इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज इसमें आपको कोई इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती. द प्रोडक्ट व्हिच इज सप्लाइड इज इन फ्रोजन फॉर्मेट. No, it is not a frozen. It is simply. Sorry, Atul ji, आप कुछ कहते हैं? It is not a frozen. It has to be kept at room temperature, and the franchise needs simply one microwave just to heat it. That's it. Okay. No special equipment is required. Okay, so especially talking about this business, it is a format जो आपका टेक अवे या डिलीवरी के ऊपर वर्क अच्छा कर सकता है. You need a location which is not very high on rentals. इसे प्रीमियम लोकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. It is low on even your initial capex. Actually, ऐसा है कि so what you need as an equipment. Sorry, go ahead, Atul ji. What I am saying, previously we thought that delivery from the house is the best option, but from our experience, we have seen that municipal corporations of any city cannot allow to do commercial activity from the home. So franchise need a small shop just so that they can display their brand also, and their sale will be 3 times more than the home delivery. एंड अतुल जी, ये टोटल इन्वेस्टमेंट आपने सारा चीजें जो मिला के बोली तकरीबन 4 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट है, विच इंक्लूड्स योर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ मे बी अ रेफ्रिजरेटर एंड आल्सो दिस इज द मैक्सिमम. ठीक है. एंड इसमें अतुल जी 2-3 क्वेश्चंस लूंगी क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि हमारा पहला एक्सपीरियंस नहीं है, क्या टीम लगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट है जिसमें आपको बहुत स्किल्ड लेबर नहीं चाहिए या स्पेशलाइज्ड स्टाफ आपको नहीं चाहिए होता. इट इज अ प्रोडक्ट व्हिच इज रेडी टू हीट एंड सप्लाई नेक्स्ट. मैडम नेक्स्ट वीक जाती है डायरेक्टली फ्रेंचाइजी को दी जाती है. इसमें किसी को कोई फूड स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं है, since it is a chefless model. And next week I will provide you the demonstration video how to heat and deliver. Totally unskilled labor chahiye who can operate only the microwave. Microwave can be operated by anyone. It is not a big machine. Right. So we will provide the demo. इसमें हम हाँ जी जी 2-3 क्वेश्चंस क्विकली मैं लूंगी. एक तो इसमें हायरिंग ऑफ एम्प्लॉइज, हाउ मेनी टीम वी वुड नीड इज वन क्वेश्चन, एंड कौन सी लोकेशंस के लिए आप ओपन है, ये 2 चीजें अगर हम इमीडिएटली कवर कर पाएं. एंड बाकी फ्रेंड्स आई विल रिक्वेस्ट हम अतुल जी से आपकी कॉल करा देंगे. वी आर ओपन पैन इंडिया. वी आर already having 6 outlets in Delhi already. Due to pandemic there is a problem. Otherwise आपको पता है कि फूड इंडस्ट्री सबसे ज्यादा इफेक्ट इसी कोरोना टाइम में हुई है. अदरवाइज वी आर रनिंग वेरी वेल इन दिल्ली एंड वी आर हैविंग सो मेनी क्वारीज आउट ऑफ दिल्ली. एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर द लिफ्टिंग ऑफ द लॉकडाउन. हाँ जी. And Atul ji, we'll come back to you. And in fact, I do see a lot of people asking. So friends, what we can do, क्योंकि आपको information. You can inform your investors that if they want the total information, I will send you all the information to you. Then you can send it to the others. And the demo video we are preparing next week, and we will send it to you also, so that they can see how they have to work. Sure, Atul ji, we'll. Whoever has reached out to us, हम सबको आपको एक डेमो वीडियो दे देंगे where you can see how the product is to be used. उसको हीट करना है, प्रेजेंट करना है, and जो भी लोग इंटरेस्टेड है will also connect with Atul ji in the coming week. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you. Thank you so much, Atul ji. Thank you. Thank you so much, Atul sir, for joining in today. Thank you. Now, the next brand which we are bringing for each one of you comes from Gujarat, Wagad Khari. They are the manufacturer, distributor, and exporter of herbal cosmetic products of skin, hair, and bath since 2005. They already having network in 22 plus cities, plus states,
and covering 250 plus dealers all over India. And we invite Jay Mehta, who is taking care of this particular brand, to showcase his business idea with each one of us. Thank you so much, Jay, for joining in today. Over to you. Thank you so much, Archana and Team Franchise India, for allowing us to present our brand in front of India. So, Archana, do you have the presentation? We are just starting it. Last minute. So basically, मैं आपको पहले मेरे brand से introduce कराऊंगा. हम Wagers Khadi is a brand which is selling the product herbal products since 2005. हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं सारे हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं और सारे रूरल एरियाज में बनते हैं, जिसमें 80% वुमेन एम्प्लॉयमेंट है. So we are a brand which believes in promoting women empowerment in rural areas as well as providing quality products to our customers. हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, I would say we are dealing in more than 250 products. जितने भी प्रोडक्ट है सारे गवर्नमेंट सर्टिफाइड हैं and it is 100% natural. We have a certification of that. We are presently exporting in three countries, and we are selling it since 2005. So it is a well-known brand in Pan India. Basically, Khadi is an association of government. It was started by Mahatma Gandhi. We are a part of it, and we are one of those selected brands which are part of it. There are many criteria which are regarding to quality and employment which you need to fulfill to become a Khadi brand. So we are one of them. And we are affiliated by Khadi, means government has allowed us to use the word Khadi in our brand. So we are affiliated by KVIC. We are dealing in more than four categories of bath and body, skin care, health care, and health and wellness. So आपको सबको पता ही रहेगा कि ड्यू टू कोरोना अभी people aware हो रहे हैं to use quality products जो beauty industry में. So now people are becoming aware about not using chemical products. So this is a market which is going to grow very fast because in India, let's say if the population is very high, the customers are very high. Now people are getting aware about herbal products. There are not many brands which are selling herbal products which we can say that which are completely herbal. There are many brands which say they are selling herbal, but we can't say that they are 100% herbal. But we are one of those brands which we can say the products are herbal. So there is no doubt in the quality of the products. As you can see, we have a distribution network of more than 1,700 retailers all over India. We have a customer base of 4.5 lakhs pan India. We are currently present on Amazon, Flipkart, and all the e-commerce platform. You just name the platform, we are available on that. We have our own website, application, and everything. So the marketing purpose or the marketing of the brand or the franchisee or the person who is going to take the franchisee is going to done by the company itself. Can you please shift? See the mission and vision of our brand. As I mentioned earlier, the mission of our brand is to sell quality products to the middle class. Middle class एक ऐसी मतलब person है जिनको product अच्छे use करने हैं, but due to high pricing वो use नहीं कर पा रहे हैं. जितने भी brand आज market में हैं जो quality products दे रहे हैं, price बहुत high रखते हैं. But we are one of those brand जिनका MRP average MRP 189 से 200 के बीच में है. यानी it is affordable for any person in middle class. So कोई भी common man use कर सकता है. और as you everybody know कि इंडिया में मैक्सिमम जो क्लास है वो कॉमन मैन यानी मिडिल क्लास है. सो आवर टारगेट क्लास और द टारगेट पर्सन इज अ मिडिल मैन, क्योंकि अफोर्डेबल चीज है और क्वालिटी है तो ही इज वन जो परचेस करेगा. नेक्स्ट प्लीज. As I mentioned, 80% of our employment is which we manufacture the product. It is 80% is women empowerment. जितने भी products बनते हैं रूरल एरियाज में बने हैं, हैंडमेड हैं. That means handmade products का आज डिमांड है, आपको सबको पता है. So we are one of those brands which manufacture handmade products and we are proud of that कि हम लोग handmade products बनाते हैं. Please next please. Next please. See, as I mentioned, this is our product range. Basically 4 रेंज हमने जो टोटल कवर की है वो है स्किन केयर, हेल्थ केयर, बॉडी केयर एंड हेल्थ एंड वेलनेस. अभी मेरा टोटल प्रोडक्ट है वो 250 प्लस प्रोडक्ट्स है, वो इन 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है. हम लोग शैम्पू सेल करते हैं, मेहंदी सेल करते हैं, सोप सेल करते हैं, बॉडी वॉश, हेयर वॉश, एवरीथिंग यू नेम. जो भी आपको डेली यूज में जितनी भी प्रोडक्ट्स लगती है हम लोग सब बनाते हैं और सब बेचते हैं. ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं विच आर रिक्वायर्ड डेली.
These are one of those products which any person in India or in the world will require daily. It is a daily use product. So the demand is going to increase only. There are certain products of mine. I would specific mention of Amla Bringraj shampoo and henna, which is black henna. These are one of those products which I am getting short of production. मतलब जितना production मेरा हो पा रहा है उतना तो बिक रहा हूँ, but अभी इतनी demand है कि मैं production नहीं कर पा रहा हूँ. So ये 2-3 product मेरे ऐसे हैं, I would say कि अभी आप जितना market में डालोगे उतना बिक जाएगा. Please next. This is the range of our products. These are shampoos. We also sell unisex products, means male and female दोनों use कर सकते हैं. So specifically कोई gender को हम लोग target नहीं कर रहे. Both genders can use it. Please next, please. We have an R&D team जो I would say specifically नए products लेके आ रही है market की demand के हिसाब से. जैसे कि ये photo आप देख सकते हैं, वो essential oil है. वो essential oil we developed it during the time of pandemic. क्योंकि people were getting issues regarding their health. So people nowadays in tier 1 cities or in metro cities get a problem of health, mental health. तो उसके ऊपर focus करने के लिए we developed a product which will improve the mental health of any product, any person. Sorry. So हमारी R&D team है which means develop new products which are which are going to work in the market. Can you please shift? The business model which our brand offers to the investors, basically 4 models हैं: retailer, dealer, super stockist and franchisee. अभी retailer everybody knows कि जिनका खुद का shop है, जो shop पे direct बेचना चाहते हैं, तो retail model उनके लिए है. Retail model में the margin which we gonna offer is 20 plus 5% cash discount. 20% flat discount रहता है और 5% आपका cash discount जाता है, जिसपे GST included है, जिसपे आपका ट्रांसपोर्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है. कंपनी कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है. उसके अलावा आई कैन से मार्केटिंग मटेरियल जो रहता है, पेम्पलेट्स है, लीफलेट्स है, हाउ टू यूज प्रोडक्ट्स है, जो भी है वो सब भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे. तो रिटेलर्स के लिए जिनका लो इन्वेस्टमेंट है, समवन हु इज जस्ट विलिंग टू इन्वेस्ट विद इन 10,000 to 15,000, उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है. क्योंकि एज आई मेंशन मेरे 3-4 प्रोडक्ट ही ऐसे है कि जो आपको आपका फर्स्ट मंथ में ही आपका इन्वेस्टमेंट क्लियर कर देंगे. दूसरा आता है डीलर मॉडल. डीलर इज समवन जो पर्टिकुलर एरिया के लिए भी अलाउड, लेट्स से मुंबई है, कोलकाता है, दिल्ली है. देयर आर सर्टेन बिग एरियाज. जैसे मुंबई का मैं बात करूं, माटुंगा है, नवी मुंबई है, वासी है. तो हम पर्टिकुलर एरिया के लिए एक डीलर बिठाते हैं जो अपने नीचे रिटेलर्स को सप्लाई करता रहता है. डीलर हैज द इन्वेस्टमेंट बेसिक है उनका वो है 30 से 50,000 के बीच में है, जिनको भी सारी सेम फैसिलिटीज, GST इंक्लूडेड, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग मटेरियल, एवरीथिंग इज ऑफर्ड. अभी डीलर को एक बेनिफिट जो एक्स्ट्रा मिलता है वो मार्जिन में है, वो है 30 फ्लैट मार्जिन रहता है, 5% आपका कैश डिस्काउंट रहता है. उसके ऊपर आई वुड से हम लोग मोनोपोली एक आपको मतलब फ्रीडम देते हैं कि इफ यू आर विलिंग ऑफ मतलब यू आर विलिंग टू इन्वेस्ट फॉर एन पर्टिकुलर एरिया, वी वोंट मींस अलॉट एनीवन एल्स, यानी कोई और डीलर हम लोग नहीं बनाएंगे उस एरिया के लिए जब तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है. सो कंप्लीट मोनोपोली आपका ही रहेगा. अभी नेक्स्ट मॉडल आता है सुपर स्टॉकिस्ट मॉडल, जो मेरे सप्लाई चेन का हाईएस्ट मॉडल है, हाईएस्ट लेवल ऑफ सप्लाई चेन है, जो हम लोग बेसिकली या तो पूरी सिटी के लिए अलॉट करते हैं या कोई छोटे छोटे स्टेट्स रहते हैं जैसे गोवा है या आई वुड से सिक्किम है या कोई भी झारखंड है, तो उसके लिए हम लोग पूरा स्टेट दे देते हैं. तो या मुंबई है या कोलकाता है या पुणे है तो हम पूरे सिटी के लिए देते हैं. उनके लिए मार्जिन एकदम हाई रहता है, वो है 40 plus 5% फ्लैट मार्जिन रहता है. जिनका इन्वेस्टमेंट आई वुड से 50,000 से लेके 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट रहता है, जिनको हम लोग फ्री शिपिंग देते हैं, GST इंक्लूडेड रहता है, मार्केटिंग मटेरियल एवरीथिंग मिलता ही है. उसके अलावा मोनोपोली भी मिलता है. अगर स्टेट ले रहे हो तो स्टेट मोनोपोली, एरिया सिटी ले रहे हो तो सिटी मोनोपोली मिलता है. उसके अलावा वी अलॉट अ सेल्समैन फॉर देम. जैसे कि अगर आप मुंबई में आज मेरा फ्रेंचाइजी ले रहे हो या आप लेट से मुरादाबाद में ले रहे हो या कोई भी जगह ले रहे हो, तो हम लोग एक सेल्समैन आपके लिए अलॉट करते हैं जो 50-50 शेयरिंग पे रहता है. 50% उसका सैलरी आप देते हैं, 50 मैं देता हूँ. हम लोग सेल्समैन देते हैं, सेल्समैन हम अलॉट करेंगे, वर्क आपको करवाना रहेगा. जितना भी आप जो भी बोलेंगे वो काम करेंगे और सेल्समैन डायरेक्टली आपको रिपोर्ट करेगा. और मतलब सुपर स्टॉकिस्ट मॉडल का बेसिक बेनिफिट यही है कि आपको डायरेक्ट रिटेल, अगर इफ यू आर विलिंग कि हम लोग रिटेल बिजनेस में भी न जाए, क्योंकि ड्यू टू कोविड रिटेल बिजनेस में थोड़ा क्योंकि पब्लिक आ नहीं रही है, डायरेक्ट कस्टमर्स आर नॉट गोइंग टू परचेज फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द शॉप. तो सुपर स्टॉकिस्ट मॉडल के लिए एक बेनिफिट ये रहता है
तो उसको डीलर को या उसको जो होलसेलर रहता है अपने एरिया को उसको माल बेचना है, तो उसके लिए सुपर स्टॉकिस्ट मॉडल करंट सिचुएशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट है। उसके बाद फ्रेंचाइजी मॉडल आता है जो हम लोग पर्टिकुलर सिटीज के लिए देते हैं। टायर 1 सिटीज के अलावा वी आर नॉट प्लानिंग। टायर 2 सिटीज जो अच्छी रहती है उसमें हम वीकेंड, बट टायर 1 सिटीज में बेसिकली जाते हैं। उसका इन्वेस्टमेंट 4 लाख का रहता है, जिसमें हम लोग फ्लैट 50% मार्जिन देते हैं। एवरी प्रोडक्ट पे 50% मार्जिन मिलता है। बाकी बेनिफिट्स जो जैसा मैंने मेंशन किया, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग मटेरियल, सेल्समैन, एवरीथिंग वी प्रोवाइड। फ्रेंचाइजीज का एक बेनिफिट जो रहता है वो एक्सक्लूसिव स्टोर है, तो वी मार्केट इट मोर, क्योंकि वो मेरा खुद का ब्रांड का स्टोर है, एक्सक्लूसिव स्टोर है। तो हमारे जितने भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग रहती है, जैसे कि आई वुड से इफ समवन हैज टेकन माय फ्रेंचाइज इन बेंगलोर, तो बेंगलोर का यानी इफ फ्रॉम द टॉलीवुड इंडस्ट्री we hire some actor which is very famous, we tell him to come to your franchisee and purchase the product from you। तो ऐसे प्रमोशन करेंगे। वेरियस मेथड रहता है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग या जो भी है वो उस मेथड से, डिजिटल मार्केटिंग से हम लोग फ्रेंचाइजीज को ज्यादा प्रमोशन मिलता है। बट फ्रेंचाइजी करंटली वी आर जस्ट विलिंग इन टायर 1 सिटीज एंड टायर 2 सिटीज ओनली। नेक्स्ट प्लीज। जो सपोर्ट हम हमको देंगे, ये सब तो मैंने बोला, मार्जिन वगैरह, सेल्समैन, एवरीथिंग एल्स, but the support which we gonna provide you is digital marketing, because we are living in the 21st century. Everybody knows now digital marketing is the most modern and most easiest method of marketing. We have I would say we have many influencers or many brand ambassadors which we have. Let's say we have one of the brand ambassadors which is Disha Vakani, the Daya Bhabhi in Tarak Mehta serial. So we have her which markets our product. We have many different methods. Let's say giveaway method, we have different schemes. So there are various methods which we will help you to develop your business in your local area as well. Can you please shift the analysis of your data? Let's say you are you are investing in my brand in a tier 2 city. Tier 2 city generally has a population of middle class and upper class, let's say. So if your customer is basically middle class, I would suggest you to buy the product which suits the middle class. If your customer is basically female or feminine, so I will suggest you to buy more products which are related to female products. Let's say I would suggest you to buy lotions, lip balm, but or hair color. But if your customer is male, I would suggest you to buy charcoal products which are masculine products. So this is the basic analysis of your data and help you in analyze your data. Other than that, the main feature or the main support which we provide is piece-to-piece replacement. Let's say now in today's world, the person who is investing in my brand, let's say there are some certain goods which he is not able to sell. So we accept that goods, and in return of that goods, we provide him the same goods which are, I would say, of his choice. Let's say there are certain flavors of shampoos which you are not able to sell. So you return me back, and I will provide you the shampoos which you feel that would run in your area, or which you tell me rather other than shampoos I can also supply. You tell me that in my area there are soaps which are selling very quickly or better, which are better in sales. So I will provide you the soaps in return of that shampoo. So there is no dead investment of yours. आज अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लेट्स से अगर मेरी ब्रांड में आप सुपर स्टॉकिस्ट बन रहे हो, 1 लाख तक का आपका इन्वेस्टमेंट है, अगर आपका 5-6 हजार का गुड्स ऐसा है जो बिक ही नहीं रहा है, तो मतलब 5-6 हजार का गुड्स में रिटर्न ले लूंगा, उसके सामने आपको 5000 वर्ड्स गुड्स दे दूंगा, जिसमें मेरा कोई एक्स्ट्रा आई वुड से चार्जेस नहीं रहेगा, रिटर्न चार्जेस या ऐसा कुछ कमीशन वगैरह हम कुछ चार्ज नहीं करते, विच इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। नेक्स्ट प्लीज। सो बेसिकली जैसे आई वुड से पीस टू पीस रिप्लेसमेंट, जैसा और एक हमारा स्कीम्स रहता है, सीजनल स्कीम्स है, वो सब भी आपको प्रोवाइड हम लोग करेंगे। तो बेसिकली दिस इज व्हाट वी आर प्लानिंग टू सेल। ऑल द क्वेश्चंस आर आंसर्ड। थैंक यू सो मच जय जी। कुछ क्वेश्चंस जो मैं लूंगी, I am seeing some interest which are coming from various pockets in India. So we see important market है जो आप बताना चाहते हैं, या पैन इंडिया हमारे लिए करंटली ओपन होगा। एक सिटी गोरखपुर से मैंने इंक्वायरी देखी, एक सिलीगुड़ी है फॉर एग्जांपल। तो बहुत सारी टियर 2 लोकेशंस भी हैं जहाँ से इंक्वायरी आ रही है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कौन सी आपके लिए प्रायोरिटी सिटीज हैं फिलहाल। एंड सेकंड क्वेश्चन, अगर आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट के बारे में बता सकें, बिकॉज इन्वेस्टमेंट हमारी 4 पॉसिबिलिटीज हैं या प्रोबेबिलिटीज हैं हमारे पार्टनरशिप की, तो इसमें एवरेज इन्वेस्टमेंट हम किस तरीके से हम देखते हैं? मैम जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका था कि व्हाट आर आवर प्रायोरिटी सिटीज,
तो आई वुड से पुणे, हाँ जी। बैंगलोर और दिल्ली, ये 3 को छोड़ के पैन इंडिया वी आर ओपन। पुणे, दिल्ली एंड बैंगलोर, ये 3 सिटीज ऐसी। गोरखपुर हो गया, सिलीगुड़ी हो गया, ये लोकेशन सब ओपन है। यस, ये 3 सिटीज जो मैंने मेंशन की फॉर सुपर स्टॉकिस्ट अवेलेबल नहीं, बट डीलर, रिटेलर्स, एवरीबडी कैन। और जो दूसरा क्वेश्चन था आपका जो इन्वेस्टमेंट का था, तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, जो रिटेलर बनना चाहते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट 10 से 15,000 के बीच में रहता है। डीलर का इन्वेस्टमेंट 30 से 50,000 तक जा सकता है। एंड दी सुपर स्टॉकिस्ट उनका है 50 से 1.5 लाख, 1.25 लाख तक भी, मतलब वो रेंज में जाता है। जो फ्रेंचाइजी लेता है उसका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट 4 लाख का रहता है, जिसका आई वुड से हम लोग 50% मार्जिन देते हैं, जिसमें आपका 4 लाख का गुड जाता है, 1.5 लाख की फ्रेंचाइजी फी जाती है और 1.5 लाख का फर्नीचर जाता है। तो ये डिफरेंट इन्वेस्टमेंट है। एक और क्वेश्चन चलिए मैं लेना चाहूंगी, वो 4 लाख के ऊपर है। जैसे आपने बताया 4 लाख का इन्वेस्टमेंट है, सो आई एम सीइंग अ क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर कृणाल शाह। वो पूछ रहे हैं ये 4 लाख सारा हमारा जो इन्वेस्टमेंट है ये हमारा स्टॉक के ऊपर है या ये बाकी जो हमारे फिक्सचर्स हैं वो भी इंक्लूड करता है? नो सर, जैसे कि 4 लाख के इन्वेस्टमेंट में यू जस्ट नीड टू पे मी 2 लाख फॉर द स्टॉक। बाकी का जो 2 लाख है वो मेरा फ्रेंचाइजी फी और फर्नीचर का रहता है। उसके अलावा आपका कुछ इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं रहता है। और उस पे भी इफ समवन इज विलिंग टू टेक माय फ्रेंचाइजी, जो 2 लाख आपको पे करने फॉर गुड्स, उसमें भी मैं 1 लाख का आपको क्रेडिट देता हूँ 1 मंथ के लिए। तो ऑन द इनिशियल डे, जो फर्स्ट डे आपका फ्रेंचाइजी का है, यू जस्ट नीड टू पे मी 1 लाख फॉर गुड, एंड बाकी का 3 लाख है वो इसके लिए, अपने गुड फर्नीचर एंड फ्रेंचाइजी फी के लिए। एक और क्वेश्चन क्विकली आई टेक इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम बिकॉज वी आर ऑलरेडी शॉर्ट ऑफ टाइम। समित जी पूछ रहे हैं कि अगर हम आरओआई की बात करते हैं, एवरेज आरओआई अक्रॉस दीज 3 या 4 अगर हमारे फॉर्मेट्स हैं, क्या एवरेज रिटेलर के लिए, डीलर के लिए, सुपर स्टॉकिस्ट के लिए एवरेज हमारा आरओआई क्या पीरियड रहता है? मैम सबसे पहले मैं फ्रेंचाइजी के लिए बताऊँ तो उसका आरओआई पीरियड 3 से 4 मंथ्स रहता है। जो मेरे ऑलरेडी सेल हो चुके हैं फ्रेंचाइजी, उसकी बात कर रहा हूँ। जो सुपर स्टॉकिस्ट है और उनका है हाँ जी, वो अराउंड 1 मंथ से लेके 1.5 मंथ तक रहता है। डीलर का 20 से 30 डेज के बीच में रहता है, एंड रिटेलर्स इज 20 to 25 डेज। रिटेलर तो आपका एक्सक्लूसिव स्टोर हो गया ना जी, जिसमें आप पूरा इन्वेस्टमेंट करते हैं। टिपिकल आरओआई उसका मेरे को लगता है दैट विल टेक टाइम बिकॉज इसमें आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, आपका रेंटल हो जाता है, आपका स्टाफ बढ़ जाता है। So don't you think this would take a bigger time frame? मैम जो आप बोल रहे हो फ्रेंचाइजी के लिए है, फ्रेंचाइजी के लिए इफ समवन इज विलिंग, मेरे पास पूरा मॉडल उसका रेडी है। आई कैन एक्सप्लेन इट टू हिम कि 3 से 4 मंथ जो मैंने बोला वो किसके बेसिस पे बोला है, क्योंकि जो टायर 1 सिटीज है उसी के बेस पे बोला है। जी we'll come back to you. एक और जो मैं questions लूंगी, and lot of people are asking, I see somebody from गोरखपुर, we have Mr. अभय राय, वो samples लेना चाहते हैं। तो अगर आप बताना चाहते हैं, because आपका product पैन इंडिया अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, एंड जीटी में भी अवेलेबल है, जनरल ट्रेड में अवेलेबल है। अगर कोई लेना चाहता है या आप एक्सपीरियंस करना चाहता है, you want to mention any places where people can procure? मैम वो गोरखपुर से है तो he can find around him, बट उससे अच्छा है कि कंपनी मतलब उनका एड्रेस आप मेरे को प्रोवाइड करें, हम लोग डायरेक्ट उनको सैंपल्स प्रोवाइड करते हैं। Right. ठीक है अभिजी, we'll come back to you and also we'll connect you with Mr. Jay Mehta and everybody else who's asked the questions. We'll come back to you, friends, and आपकी जो भी calls हैं, meetings हैं, our teams including me, I will try and write to as much as our investors who have written today, and I will personally be involved in case you need any kind of information. Thank you so much, Jay ji. And I have a query for Modern Trade. Modern Trade में अभी नहीं देखना चाहेंगे because they already are having tie-ups. Mr. Jay Mehta, बताना चाहेंगे अगर Modern Trade के लिए आप open हैं? Modern Trade मतलब कौन सी एरिया के लिए आप मेरे को बता रहे हैं? I think I don't see the location, but we can discuss that. I don't know which location he's asking from, but he was just asking अगर Modern Trade भी एक possibility है associate होने के लिए. So, friends, we can come back to all of you. We have captured your inquiry, and Mr. Mehta will be happy to reach out to every investor with respect to your questions. And I will also write to all of you, and we'll fix up a time जब आप 1-to-1 call meeting जो भी आप करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे.
So this is Allahabad, Mr. Mehta. You jo, no, that's anyways. We'll come back to you. I still don't understand which city he's asking from. I don't have the name. It is Oppo A53. I don't know which city is that. So friends, we'll come back to you. And Yes. Thank you. Thank you so much, Jay, for joining in today. Thank you so much. Now we invite Mr. Neeraj Sharma, who is representing his brand, which support Vocal for Local. They are offering a wide range of natural product, and you can start your business as low as with 2 lakh rupees. It's a no royalty fee. It's a no royalty fee business model. Thank you so much, Neeraj ji, for joining in today. Good afternoon, sir. नमस्कार, कैसे हो? Namaskar. So we can start presentation from your side. Over to you, sir. Hello, madam. Okay. So, can we have a आज क्रस्टो ब्रांड है हमारा, नीरव शर्मा मेरा नाम है, और एक इंडिया का हेल्थ एंड हाइजीन में पेटेंट प्रोडक्ट्स हर्बल और नेचुरल में जो फर्क रहता है, ये गुजरात बेस्ड कंपनी है, अहमदाबाद बेस्ड हमारा फैक्ट्री है। क्रस्टो जो आप देख रहे हैं ये ब्रांड है हमारा, यू कैन सर्च इट ओवर, जिसका टैगलाइन है इंस्पायर्ड बाय नेचर, फैशन बाय साइंस। हमारे जितने भी वाइड एंड अप रेंजेस है, मोर देन 100 प्रोडक्ट्स वी हैव, हेल्थ एंड हाइजीन रिलेटेड। दूसरा, जीवन जरूरियात की सारी वस्तुएं, इन शॉर्ट प्रोडक्ट हमने डेवलप किए हैं। मेन चीज है नेचुरल और हर्बल का जो डिफरेंस है वो भी हमें एक पता होना चाहिए। गूगल पे आप सर्च कर सकते हो। हर्बल मीन्स के सेमी सिंथेटिक बोलते हैं जिसे, कि सिंथेटिक प्रोडक्ट्स जो आज की तारीख में मार्केट में मिल रहे हैं उसमें से फिर मैं आज समझ लो कि कोई भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स थोड़े बहुत डाल के अगर मैं हर्बल बोलता हूँ तो वो हर्बल चीजें इन शॉर्ट एक फूड एंड ड्रग्स के टेक्निकल नॉर्म्स के हिसाब से हर्बल प्रोडक्ट्स बोले जाते हैं। हमारे जो टोटल है वो नेचुरल प्रोडक्ट है। हर्बल और नेचुरल में फर्क है और ऑर्गेनिक में भी फर्क है। नेचुरल प्रोडक्ट का मीन्स ये है कि आज फॉर एग्जांपल हमारा टॉयलेट क्लीनर भी आप इन शॉर्ट पी सकते हो, डिश वॉश भी पी सकते हो, 100% नेचुरल, कोई भी एसिड स्लरी नहीं, कोई सर्फेक्टेंट नहीं, कोई भी इसके अंदर एडिटिव्स नहीं रहते। हमारा जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो अबाउट अस, क्रस्टो इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड और एक्सोटिका, इन शॉर्ट आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी, और हमने बहुत सारे इन्वेंशन किए हुए हाइजीन के रिगार्डिंग। मेरा पर्सनल जो बैकग्राउंड है वो आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर बेस्ड ऑन अहमदाबाद। मैं यंगेस्ट IAS ऑफिसर था, 21 साल की उम्र में मैंने UPSC क्रैक किया था। मैंने 3 साल जॉब करने के बाद मैंने इसके अंदर कन्वर्ट हुआ हूँ, कंपनी स्टार्ट किया है। ये मेरे सारे रिसर्च एंड पेटेंट प्रोडक्ट्स है 36 कंट्री में, जितने भी हम फ्यूचर में। अब नेक्स्ट मैडम, नेक्स्ट, ये जो आइडिया और विजन जो आप देख रहे हैं कि उसके अंदर ये हमारी कंपनी का एक फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है, हमारे इनोवेशंस है, जिसके अंदर कोई भी नॉन हैजार्डस प्रोडक्ट है, सारे सिंथेटिक मटेरियल कोई यूज नहीं होता, 100% नेचुरल है। दूसरे जितने भी सर्टिफिकेशंस या फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट से जो लेने पड़ते हैं या इंटरनेशनली लेने पड़ते हैं वो सारे हमारे पास रिकॉग्निशंस है। वी आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इन मोर देन 22 सिटी स्टेट्स इन ऑल ओवर इंडिया, और ये 5 साल से कंपनी रन कर रही है। नेक्स्ट, ये 100% इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स है ये सारे ब्रांड्स का। कंपनी जैसे मैंने आपको बताया 5 साल से हम इंडिया मार्केट में है। 2015 से हम FMCG रिटेल में पहले थे, और उसके साथ साथ हमने काफी सारा डेवलपमेंट डिपार्टमेंटल स्टोर्स और रिटेल सेक्टर में हमने किया हुआ है। फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट इसलिए है हमारा कि जो हमने डिपार्टमेंटल स्टोर में से हमें जो अवेयरनेस या हमें जो रिस्पांस मिला, उसके बाद हमने फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किया लास्ट मार्च से, और कस्टमर के इतने सारे फीडबैक की वजह से हमने फ्रेंचाइजी स्टोर्स हमने खुद के स्टार्ट किए। मोर देन 74 प्रोडक्ट्स भी है जो हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं। लास्ट 8 महीनों में हमने जो इन शॉर्ट ये ब्रांड लॉन्च किया, उसके आधार पे
इसके अंदर हमने छोटे इन्वेस्टर या एंटरप्रेन्योर्स को हमने एम्पावरमेंट करने के लिए हमने खुद का एक सोच रखा कि जिसके अंदर हम कोई भी रॉयल्टी फीस नहीं लेते, कोई भी अदर फीस नहीं लेते, और आप खाली 1 लाख रुपए से ये आप जो स्क्रीन में देख रहे हैं वो आप स्टोर ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट। क्यों फ्रेंचाइज कॉन्सेप्ट, और क्यों आज की तारीख में हमने विद इन ये लॉकडाउन के पेंडेमिक सिचुएशन के पहले विद इन 20 days वी हैव क्रॉस मोर देन 47 फ्रेंचाइजीज। मार्च महीने में जैसे ही हमने फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट फॉर्मूला लॉन्च किया, आप प्रीवियस स्लाइड पे मैडम चले जाइए। एक्सक्यूज मी, प्रीवियस स्लाइड पे। यस, तो सबसे छोटा इन्वेस्टमेंट है 1 से 2 लाख रुपए का, जिसके अंदर 100% मटेरियल ही आता है। 1 भी रुपए हम कंपनी चार्ज नहीं करती है अलग से कोई। दूसरा, इसके अंदर कोई रॉयल्टी फीस या कुछ भी नहीं है। वो पॉइंट्स वाला जो स्लाइड था मैम, कोई भी अलग तरीके से हम आज की तारीख में हम चार्ज नहीं करते हैं रॉयल्टी फीस। दूसरी चीज है कि सारी की सारी प्रोडक्ट हम सुबह उठ के शाम को सोते हैं तब तक की सारी प्रोडक्ट है, डेली जनरल नीड्स प्रोडक्ट ही है। इंसेंस स्टिक्स यानी कि अगरबत्ती से लेके सोप, शैम्पू, हेयर ऑयल, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, डिश वॉश, लॉन्ड्री लिक्विड, कार क्लीनर, कार फ्रेशनर्स, उस तरीके से ही सारे जनरल प्रोडक्ट्स है हमारे। दूसरा के सारे प्रोडक्ट की एमआरपी जो बोलते हैं वो पॉकेट फ्रेंडली है। 200 रुपए से ऊपर की कोई चीज नहीं है हमारी, 100% नेचुरल होने के बावजूद भी। दूसरा के हाईएस्ट मार्जिन हमने ऑल ओवर इंडिया में हमने प्लेस किया है। फैक्ट्री टू फ्रेंचाइजी मॉडल डाला है हमने। 47 to 68% एवरेज मार्जिन फ्रेंचाइजी ओनर को मिलेगा आफ्टर पेइंग जीएसटी। नेट प्रॉफिट 47 to 68 यानी कि एवरेज 56% मार्जिन आपको मिलेगा। दूसरा, ये कंपनी का नो डंपिंग पॉलिसी है। कोई भी प्रोडक्ट जो आप फर्स्ट टाइम जब आप फ्रेंचाइजी के लिए लेते हो तो 74 प्रोडक्ट के हर एक के पर एसकेयू आपको 13-14 प्रोडक्ट्स आपको हम देते हैं। उससे आपका स्टार्ट होता है। उसके बाद आप अकॉर्डिंग टू पीओ, जैसे कि हैंड वॉश खत्म हो गए तो हैंड वॉश ले सकते हो, शैम्पू खत्म हो गए तो शैम्पू, आपके नीड के हिसाब से आप पीओ जनरेट कर सकते हो। इसके कंपनी आपको कभी भी डंपिंग नहीं करेगी। थर्ड थिंग इज दैट के आप जो रिटेल सेक्टर कंपनी ने जो इसके अंदर एक 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम लोग 2 टाइप के डिसीजन लिए हुए कि कंपनी आज की तारीख में रिटेल और डिपार्टमेंटल स्टोर और सेल कर रही है, वो हमने मार्च महीने से हमने बंद कर दिया। ऑल ओवर इंडिया के जितने भी डिपार्टमेंटल 650 से ऊपर डिपार्टमेंटल स्टोर में हमारा अवेलेबिलिटी है, और हम धीरे धीरे वेव ऑफ कर रहे हैं। उसका कारण है कि हम फ्रेंचाइजी होल्डर को मोनोपोली देना चाहते हैं। हम कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसके अंदर ना तो कंपनी रिटेल में बेचेगी, ना कंपनी ऑनलाइन सेल करेगी। कंपनी जितना भी ब्रांडिंग करती है उसके रिलेटेड जो भी कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए तो वो आपकी फ्रेंचाइजी के वहीं से ले सकता है। आजू बाजू की स्टोर्स में या उस तरीके से अवेलेबल कंपनी भी नहीं कराएगी और आप भी नहीं कराओगे। ये हमारा मोनोपोली पर्सनल फ्रेंचाइजी ओनर का ही मोनोपोली रहना चाहिए। कंटिन्यूअस एडवर्टाइजिंग एंड अवेयरनेस कैंपेन हमारे रन होते रहेंगे। मास्टर फ्रेंचाइजी जो एरिया पूरा डेवलप करते हैं ज्यादातर फ्रेंचाइजियों से मिलके, तो मास्टर फ्रेंचाइजी के साथ साथ हम लोग बजट डिस्कस करके एडवर्टाइजिंग और अवेयरनेस कैंपेन हम लोग रन करते हैं। कस्टमर रिव्यूज और रिपीटेशन जो आप गूगल पे भी देख सकते हो कि इन शॉर्ट हमारा जो प्रोडक्ट के सारे रिव्यूज है वो आप ऑलरेडी हम लोग प्रूवन है मार्केट में। सो उसकी वजह से हमने फ्रेंचाइजी मॉड्यूल में हम सेगमेंट चेंज कर रहे हैं। और छोटे इन्वेस्टर्स या छोटे एम्प्लॉयमेंट, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है बजट का इश्यू। आप बड़ा भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो
फिर भी हम ऐसा बोलते हैं कि पहले आप ₹1,00,000 का माल लेके आप स्टोर स्टार्ट करके आप अपने पहले कॉन्फिडेंस होइए, उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंगली अपने नीड के हिसाब से आप कितना भी माल मंगवा सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर और फैक्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सिंगल ओनर कंपनी है। आज की तारीख में इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से है कि आपको मटेरियल का या प्रोडक्शन का कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ये 100% प्रूवन और 5 साल से चलती हुई ये कंपनी है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, दो टाइप के इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर, एक 2,20,000 का है और एक 1,10,000 का है। 2,20,000 यानी कि मास्टर फ्रेंचाइजी, उसमें भी आपको स्टोर ही करना रहता है, पर आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन का अलग से फायदा मिलता है, जिसमें अलग से आपको 12% आपको मार्जिन मिलता है एज अ डिस्ट्रीब्यूटर लेवल, कि आप जितनी भी आपके एरियाज में जितनी भी फ्रेंचाइजी आप बढ़ाते हो वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपके थ्रू जाएगा और आपको अलग से 12% मिलेगा। जो हम फ्रेंचाइजी मार्जिन जो 47 to 68% है, उसके अलावा अलग से 12% आपका डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन रहेगा। जो मास्टर फ्रेंचाइजी जो आप 2,20,000 का आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट, उसके अंदर भी आपको स्टोर ही करना है। और जो डी आप देख रहे हैं 1,10,000 का, उसमें आप डायरेक्ट पहले फ्रेंचाइजी ले सकते हैं जो 1,10,000 से स्टार्ट होता है, जिसके अंदर ₹1,00,000 का आपको मटेरियल आएगा और 10,000 रुपीज का आपको लाइफ टाइम हमारे एम्प्लॉइज का सर्विस और लाइफ टाइम एडवर्टाइजिंग, यानी कि आपके फुटफॉल और आपके पर्टिकुलर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कंपनी जितना भी पैसा डंप करती है वो समझ लो 10,000 से ज्यादा ही होगा, पर फिर भी हम लोग एक आपके सीरियसनेस के लिए हम लाइफ टाइम एक बार 10,000 रुपया हम चार्ज करते हैं, जिसके अंदर सर्विंग चार्ज और एडवर्टाइजिंग चार्ज रहेगा। ₹1,00,000 का माल मिलेगा फ्रेंचाइजी ओनर के लिए। नेक्स्ट, उसमें भी आपको 47 to 68% मार्जिन आपको मिलता है। नेक्स्ट, कंपनी रोल जो मैंने आपको बताया कि जैसे कि टू मेंटेन द बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, हम हमारे प्रोडक्ट्स हर हफ्ते हर 10 दिन अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिव्यूज और हम उसमें चेंजेस लाते जाते हैं। हम प्रोडक्ट की रेंज बढ़ाते जाते हैं अकॉर्डिंग टू सीजन। ब्रांड वैल्यू और प्रमोशंस के ऊपर हमारा कंपनी का खास बड़ा ध्यान रहेगा। आपके वहाँ पे अवेयरनेस करवाना, जैसे कि लीफलेट्स है, न्यूज़पेपर है, रेडियो है, सोशल मीडिया, टेलीविजन, ये सारी चीजें रहेंगी। कभी भी डंपिंग पॉलिसी हम लोग नहीं करेंगे, जैसे आपको हम पहले दिन से हम कॉन्ट्रैक्ट में लिख के देते हैं। अलग अलग प्रोडक्ट हम बढ़ाते जा रहे हैं। दूसरी चीज के हमारा स्टाफ जो रहेगा वो आपके कोई भी दिक्कत है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट नॉलेज है, प्रोडक्ट कैसे बताना है, ये सारी चीजों के अंदर आपको सपोर्ट करेगा। दूसरा, हमारी जितनी भी प्रोडक्ट है अगरबत्ती से लेके शू पॉलिश तक, इन शॉर्ट जितनी भी प्रोडक्ट है वो 100% नेचुरल है। उसका प्रोडक्ट डेमो आप लाइव डेमो दे सकते हो स्टोर पे। टॉयलेट क्लीनर चक्के या डिश वॉश चक्के या लॉन्ड्री लिक्विड या कोई भी चीज है वो आप 100% लाइव डेमो से प्रूव करके बता सकते हो कि ये प्रोडक्ट नेचुरल है। दूसरा के कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो हमारा ऑलरेडी, वी आर द प्रूवन ब्रांड क्रस्टो। आप ओवरऑल आप इसका मार्केट सर्वे कर सकते हो। मोर देन 650 डिपार्टमेंटल स्टोर, जैसे कि दिल्ली है तो राज मंदिर, क्वालिटी मार्ट, वो सभी बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में वी आर अवेलेबल। डी मार्ट से लेके क्वालिटी मार्ट, ई मार्ट, जितने भी मार्ट्स रहते हैं उसके अंदर हम लोग अवेलेबल है। दूसरी चीज पर अब वो सारे डिपार्टमेंटल स्टोर में से हम लोग वेव ऑफ करके हम खुद के स्टोर एस्टेब्लिश कर रहे हैं। आज की तारीख में पैन इंडिया, दिल्ली हो, बॉम्बे हो, पुणे हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब, यूपी, सभी जगह पे हमारे फ्रेंचाइजीज आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। प्रूवन थियरी है, हमने 20 ही दिन में 47 फ्रेंचाइजीज हमने ओपन किया हुआ है। और ये पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से अभी कोई इनोग्रेशन नहीं कर सकता, इसलिए हमने उन लोगों को होल्ड पे रखा है। आज की तारीख में हमें फ्रेंचाइजी के जो लीड्स या हम बोल सकते हैं कि फ्रेंचाइजी से जो हमारे इन्वेस्टर्स है वो बढ़ते ही जा रहे हैं।
सो रिस्पॉन्स काफी अच्छा आ रहा है. सो नेक्स्ट. तो आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो कंपनी के रिगार्डिंग या तो आप बता सकते हैं कि किस तरह से इसके अंदर हम हेल्प कर सकते हैं. थैंक यू सो मच नीरव जी. मैं 2-3 क्वेश्चंस लूंगी क्विकली ऑडियंस से. हमने 2 मॉडल की बात की है. एक हमारा मॉडल मास्टर फ्रेंचाइजी मॉडल है, जहाँ पे हम जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी वो सिर्फ अपने ही फ्रेंचाइज स्टोर्स जो उसके नीचे खुलेंगे उनको ही कर सकते हैं, और उसके ऊपर उनको एक एडेड आपको एक मार्जिन मिलता है सप्लाई का. एंड दूसरा मॉडल है जहाँ पे एक छोटा स्टोर अपना आप खोल सकते हैं 300-600 स्क्वायर फीट का. तो नीरव जी, जो हमने इन्वेस्टमेंट की बात की, सारा हमारा स्टॉक का इन्वेस्टमेंट है, और एक हमारा जो है आपका मार्केटिंग फी का है, विच इज टर्म ऑफ द एग्रीमेंट. इसके अलावा जो आपने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था रैक्स हो गए और ब्रांडिंग भी, तकरीबन उसमें कितना इन्वेस्टमेंट और लग जाएगा, अगर हम मोटा मोटा वो भी समझ पाए तो कितना इन्वेस्टमेंट उसका लग जाएगा. उसके बाद मैं 2-3 लोकेशंस लूंगी जहां से इंक्वायरीज आ रही है. हाँ, इसके अंदर मैडम हमने स्पेसिफिकली क्यों वो कस्टमर पे छोड़ा है, या हमने एज अ ब्रांड हमने कोई स्पेशली चार्ज नहीं किया, उसका बेसिक कारण ये है कि हर एक एंटरप्रेन्योर या हर एक इन्वेस्टर का अलग अलग उनका फाइनेंशियल कैपेसिटी रहता है. दूसरी चीज के उसके अंदर मोस्ट ऑफ इंडिया की जितनी भी एफएमसीजी, जैसे कि हमने ये सर्वे करने के बाद हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जितनी भी एफएमसीजी हो या कोई भी ब्रांड हो, कोई भी प्रोडक्ट की, तो मोस्ट ऑफ कंपनी खुद का कस्टमर फ्रेंचाइजी इन्वेस्टर को समझ लेती है. हमने ऐसा बोला कि आप खाली ₹1,00,000 से हमारा स्टोर स्टार्ट कीजिए, आप अपने तरीके से अपना स्टोर डेवलप कीजिए. आपको ₹1,00,000 का बोर्ड लगवाना है या तो ₹10,000 का बोर्ड लगवाना है, वो आप ही डिसाइड कीजिए. आपके वहां पे रैक कौन से लगवाने हैं, कांच के लगवाने हैं या फर्नीचर करवाना है, वो भी आप ही डिसाइड कीजिए. उसका कारण है कि हम आपसे एक भी रुपए का अलग से चार्ज ही नहीं कर रहे. सो आपका स्टोर कैसे अच्छा लग सकता है या आप कैसा अट्रैक्शन चाहते हो, तो आप अपने धंधे का आप खुद ही अपना इन्वेस्टमेंट डिसाइड कीजिए. पर एवरेज हमने देखा है कि अभी तक जितनी फ्रेंचाइजी खुली है उसके अंदर हम जब जिसको ₹1,00,000 का माल हम जब देते हैं, तो उसके अंदर वो लोग का बोर्ड से मिला के कांच का रैक या जो भी इन शॉर्ट जो छोटा मोटा फर्नीचर वो लोग करवाते, एवरेज उनको अलग से 30-35 हजार रुपए का खर्चा आता है. दूसरा मेन चीज, हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि उनका फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो ₹1,00,000 है उसका ब्रेक इवन 15 दिन में आ जाना चाहिए. अब लोग सोचे कि 15 दिन में कैसे आता है, तो आज हम जो 74 प्रोडक्ट देते हैं उसमें से ₹1,00,000 का आप जो मटेरियल लेते हैं उसमें 74 प्रोडक्ट्स आती है. वो 74 प्रोडक्ट यानी कि पर एसकेयू 14 प्रोडक्ट आती है, यानी टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट गिने तो 750 से 800 प्रोडक्ट आती है. अब इनोग्रेशन के दिन मैडम ऐसा होता है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स मल्टी प्रोडक्ट्स है, इसके अंदर कोई भी इनोग्रेशन में भी आप जब 100 लोगों को भी बुलाते हो तो उसके अंदर कोई बंदा खाली शगुन के तौर पे भी अगर आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर कोई आया है लेने के लिए, तो वो खाली कोई सोप लेके नहीं जाएगा. अच्छा, अगरबत्ती भी रखते हो, टॉयलेट क्लीनर भी है, लॉन्ड्री लिक्विड भी है, यानी एवरेज आपको एसकेयू 4 से 5 एसकेयू का तो मिनिमम शगुन के तौर पे ही वो आपसे लेगा. सो हमने ये चीज देखा हुआ है कि जब इनोग्रेशन जो बंदा करता है तो उसके इवनिंग में ही 74 प्रोडक्ट्स में से काफी सारे एसकेयू ऐसे होते हैं जो 14 प्रोडक्ट्स हमने जो सबके दिए हुए, तो हैंड वॉश खत्म हो गए, डिश वॉश खत्म हो गए, लॉन्ड्री लिक्विड खत्म हो गया, टॉयलेट क्लीनर खत्म हो गया, या सोप, शैम्पू, हेयर ऑयल, सीरम, काफी एसकेयू टूट जाते हैं उसके. तो और 1,00,000 का जो माल है वो असली में है 1,57,800 का, ₹1,57,800 का, यानी कि 1,50,000 का माल है असली में. तो उसके अंदर से 60-70,000 का तो उनका मटेरियल इनोग्रेशन के दिन ही शगुन में ही चला जाता है. मेन जो हमारा इसके अंदर बेनिफिट है वो ये. अब सेकंड पीओ से फिर वो अपने नीड के हिसाब से जितना भी मंगा सकते वो उनके खुद के सेटिस्फेक्शन के तौर पे मंगा सकते हैं. हमने कोई फोर्स नहीं करते हम किसी से भी.
नीरज जी एक दो लोकेशंस में लूंगी एंड फ्रेंड्स आप रीच आउट कर सकते हैं हमारे हॉटलाइन पे भी। नीरज जी एक जो क्वेश्चन सुपर स्टॉकिस्ट का आया था, सुपर स्टॉकिस्ट की कोई अपॉर्चुनिटी होगी दिल्ली में? आई सॉ वन क्वेश्चन जो दिल्ली से आया था सुपर स्टॉकिस्ट के लिए, तो वो अभी आप ओपन रहेंगे अगर वो सुपर स्टॉकिस्ट आगे फ्रेंचाइज को सप्लाई कराए, या वो सिर्फ हम मास्टर फ्रेंचाइजी को ही अपॉर्चुनिटी देंगे? इसके अंदर मैडम ये प्रॉब्लम ये है कि हमारा ऑलरेडी स्ट्रक्चर ऑल ओवर इंडिया, हमने डिपार्टमेंटल स्टोर्स के रिगार्डिंग हम 5 साल से हम लोग ऑलरेडी मार्केट में है। तो एथिकली आज मैं कोई भी मेरे जो रनिंग स्टॉकिस्ट थे जिन्होंने ही सजेशन किया था कि नीरव भाई क्यों ना हम अपने स्टोर्स ओपन करें, तो आज मेरे जो करंट स्टॉकिस्ट है जो 5 साल से मेरे साथ करोड़ों का धंधा कर चुके हैं, तो मैं वो स्टॉकिस्टों को डीच नहीं कर सकता। और उन्हीं के सपोर्ट से आज फ्रेंचाइजी मॉडल का आइडिया भी उन लोगों ने ही हमें दिया है। तो सुपर स्टॉकिस्ट आज की तारीख में हमारे ऑल ओवर इंडिया में है ऑलरेडी। दूसरी चीज, वो C&F एजेंट जैसा काम करते हैं, वो स्टॉक सप्लाई करते हैं। दूसरा, उन्होंने खुद ने भी स्टोर्स खोल के रखे हैं हमारे। और वो 5 साल से हमारे साथ है, उनको ये प्रोडक्ट में इतना कॉन्फिडेंस है, उन्होंने मार्केट में पूरा इन शॉर्ट 5 साल से वो देख रहे हैं, तो उसकी वजह से मैं वो पुराने स्टॉकिस्टों को छोड़ नहीं सकता। हाँ, पर इसके अंदर जो हमारा सपोर्ट रहता है उसके अंदर ऐसा रहता है कि जो कोई बड़ा गेम करना चाहता है कि मुझे दिल्ली में एक ह्यूज तरीके से इसको डेवलप करना है और इसमें मुझे बड़ा गेम करना है, तो उसके काफी सारे रास्ते हैं कि वो मल्टी मास्टर फ्रेंचाइजी ले सकता है। यानी कि साउथ दिल्ली नॉर्थ दिल्ली के दोनों की मास्टर फ्रेंचाइजी उसने ली है। साउथ दिल्ली भी वो बढ़ा रहा है और नॉर्थ दिल्ली भी वो बढ़ा रहा है, उस तरीके से भी वो वर्क कर सकता है। दूसरा कि जहां जो एरिया अभी भी में हमारे ब्लैंक सपोज है कि भाई हरियाणा का पट्टा, फरीदाबाद या जो वैसे बेल्ट्स रहते जहां हम लोग डिपार्टमेंटल स्टोर के थ्रू अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं, या पंजाब के काफी सारे ऐसे एरिया है जहां पे हम डिपार्टमेंटल स्टोर में हम नहीं पहुंच पाए थे, तो वहां पे नेटवर्क नहीं है, तो वहां पे वो लोग सेमी मास्टर फ्रेंचाइजी यानी कि वहां का कोई लोकल बंदा है इसके साथ वो ये 50% पार्टनरशिप करके वहां पे भी वो स्टार्ट कर सकता है। तो सुपर स्टॉकिस्ट का रोल जो है वो सेम रोल ये कोई भी इन्वेस्टर मल्टी एरियाज लेके मास्टर फ्रेंचाइजीज लेके भी वो चीज सेम ही रहता है। ठीक है नीरज जी, दिस इज वेरी हेल्पफुल एंड वील गेट बैक टू एवरीबॉडी हु शोन इंटरेस्ट। नीरज जी कोई क्वेश्चंस अगर आपको दिख रहे हैं, इफ यू वांट टू टेक एनी क्वेश्चंस ऑडियंस से, नहीं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबको कि हमें रीच आउट कीजिए, हम नीरज जी से आपकी कॉल कराएंगे, बात कराएंगे, हम एक्सप्लोर करना चाहेंगे क्या पॉसिबिलिटीज हमारी। एक लमसम आइडिया मैं आपको दे देता हूँ, सारे इन्वेस्टरों के लिए ये खास बात है कि मोस्ट ऑफ इन्वेस्टर ऐसा सोचते हैं कि हम पैसा डाल देवे, कोई कंपनी हमें सब कुछ दे दे और हम पैसे वाले बन जाए। कोई भी इंडिया का कोई भी कंपनी, जब भी आप कोई भी मेरा हो या किसी का भी आप प्रेजेंटेशन देखते हो, तो उसके अगर कोई कंपनी आपको अगर स्पून फीडिंग देती है कि हम ही सब कर देंगे, तो वो आप समझ लो कि वो आपको कस्टमर समझ रहा है, वो आपको धंधा करने के लिए नहीं देगा। धंधा हमेशा आपको प्रैक्टिकली समझा दूं तो हम आपको धंधा करना सिखा सकते हैं एज अ निमित्त बन के कि भाई हमारी प्रोडक्ट इस तरह से हमने डेवलप की है, उसको आप प्रेजेंट करके आप अपना एक्सप्लोरेशन कर सकते हो। तो धंधा तो आपको खुद को ही करना पड़ेगा। हाँ, हमारा सपोर्ट रहेगा इन टर्म्स ऑफ स्टाफ हो या अवेयरनेस हो या कैंपेन हो, पर आपका ही सीरियसनेस नहीं रहेगा तो एडवर्टाइजिंग भी हम क्या करेंगे या आपका स्टोर का अवेयरनेस भी क्या करेंगे। दूसरा कि अब आने वाला फ्यूचर जो अभी हम जो देख रहे हैं लास्ट 2 साल से, तो इसके अंदर सब लोग बताते, आज समझ लो कि अगर हम एंटी बैक्टीरियल या ये बोलते हैं तो बड़ी बड़ी ब्रांडें ऐसा भी लिखती है ना, या आपने टीवी में एडवर्टाइज भी देखी होगी कि पंखा चालू करो और एंटी बैक्टीरियल हो जाएगा आपका रूम, या पेंट लगाओ और एंटी बैक्टीरियल हो जाएगा। तो आपको भी पता है कि वो मार्केटिंग गिमिक है। हम जो बात कर रहे हैं वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में हेल्थ और हाइजीन, यानी कि लोग साफ सुथरी करना, घर पे हाइजीनिक एनवायरनमेंट रखना, खुद का ख्याल रखना। हम फूड में भी आ रहे हैं जिसके अंदर पीनट बटर, एनर्जी बार, सीरियल बार, फिर केचअप्स, अलग अलग मायोनीज, ब्लेंडेड स्पाइसेस, उसके अंदर भी हम लोग आ रहे हैं। उसके अंदर भी मैडम हमारा जो सिस्टम है वो ऐसा ही रहेगा कि हम फ्रेंचाइजी होल्डर को फोटोग्राफ्स और प्राइस लिस्ट ही देंगे। जो भी प्रोडक्ट हर 2 महीने पे हम लॉन्च करते हैं कंपनी का, वो भी सबका खुद का ही मैन्युफैक्चरिंग है, थर्ड पार्टी कुछ नहीं करवाते। तो जितने भी हमारे रिसर्च प्रोडक्ट है उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप फोटोग्राफ्स और प्राइस लिस्ट ही बेचते हैं कि भाई आपके वहां पे ये चल सकता है तो आप मंगवाओ, वरना मंगवाने की भी जरूरत
नहीं है, कोई भी डंपिंग नहीं रहेगा। मेन चीज है कि आपको समझना चाहिए कि बाजार में क्या चलेगा। दूसरा, कोई भी ऐसा धंधा मत पकड़िए जो सीजनल हो, यानी कि ये जैसे कि ये जीवन जरूरियात की वस्तु है जो 12 महीने चलती है। साबुन 12 महीने चलता है, टॉयलेट क्लीनर, लॉन्ड्री लिक्विड या जो भी जीवन जरूरियात की वस्तु है का ही हमारा स्टोर है। दूसरा कि पेंडेमिक के अंदर हमारी प्रोडक्ट की वजह से हमारे सबसे बड़ा बुलेट पॉइंट ये है कि हमारा 80% से ज्यादा एसेंशियल गुड्स में आता है। इसकी वजह से कलेक्टर, हमारी फ्रेंचाइजी को लोकल कलेक्टर या जो भी तहसीलदार है वो हमें लोकल ये हमारे प्रोडक्ट की एसेंशियल गुड्स में हम आते हैं, इसकी वजह से हमें ओपन रखने की परमिशन देता है। तो सबसे बड़ा ये चीज है। कुछ नहीं तो आप लोग समझो कि ये पेंडेमिक में अगर लॉकडाउन अगले साल भी ऐसा कुछ आया या समझ लो और 2 महीने 3 महीने के बाद भी अगर ये चीज आया तो आप हैंड वॉश, टॉयलेट क्लीनर, सैनिटाइजर, ये सारी चीजें ऐसी समझ लो मिनिमम 25 चीजें ऐसी है कि जो बेच के भी आपका स्टोर चल सकता है। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन हुआ तो हमारा बंद हो गया और घर पे चले गए। दूसरी चीज, फ्रेंचाइजी ओनर जितने भी आज खुद के जो हमारे स्टोर करते हैं तो उसके अंदर मेन बेसिक फंडा ये कि उसके एरिया में उसका अवेयरनेस है, तो वो लॉकडाउन में अगर समझ लो कि कुछ भी तरीके से सेटिंग नहीं हुआ उसका ओपन रखने का, तो वो घर पे भी बैठे बैठे वो वहां पे लोकल डिलीवरी से भी वो ये सारी चीजें। और ऐसा तो है नहीं कि लॉकडाउन या पेंडेमिक है तो लोग टॉयलेट साफ करना भूल जाएंगे या कपड़े धोना भूल जाएंगे या डिश वॉश करना नहीं रहेंगे, ये सारी चीजें। और दूसरा, हमारा जो सबसे बड़ा यूएसपी है कि फर्स्ट टाइम अगर आपने कोई प्रोडक्ट किसी को दिया, हमारा प्रोडक्ट कोई ले गया और उसने एक बार यूज कर लिया, उसके बाद रिपीट का प्रॉब्लम नहीं होता है। मेन चीज, अगर हम सक्सेस हुए हैं उसका बेसिक कारण है कि हमें रिपीट सेल्स का कभी भी क्वेश्चन नहीं आया। प्रोडक्ट क्वालिटी पे ही हम लोग ने सक्सेस लिया है। हमने मार्केटिंग अभी तक, दूसरा लाइफ टाइम भी हमारी कंपनी कभी भी कोई सेलिब्रिटी या कोई भी ऐसा ताम जाम करके हम फेक मार्केटिंग नहीं करवाएंगे और नहीं ही करवाएंगे। हमारा लोकल अवेयरनेस कैंप, हमारा जितना भी एडवर्टाइजिंग में पैसा लगेगा वो सब चीजें लोकल अवेयरनेस, प्रोडक्ट डेमो और माउथ पब्लिसिटी, सोसाइटी एक्टिविटीज, उस तरीके से इन शॉर्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट कर करके ही जो लाइव चीजें हम बता के ही टीवी में तामझाम, और टीवी में भी हम एडवर्टाइज जो देने वाले हैं उसके अंदर भी कॉन्सेप्ट उसी तरह से हमने डेवलप किया है कि जिसके अंदर कोई फेस को लागे, यानी कोई बड़ा फेस लाके हम लोग उसको खाली ब्रांड को ऐसे ही बड़ा नहीं करने वाले। हमारा जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन टीवी में भी रहेगा जो हम दिसंबर महीने तक एवरेज चालू कर देंगे, वो भी हमने ऐसा प्रोजेक्शन रखा है कि उसके अंदर भी कॉन्सेप्ट ऐसा ही रखा है कि जिसके अंदर वो स्टोर में आके आपसे पूछे कि ये क्या चीज होता है। इस तरह से आपको ये स्टोर में भी जो सबसे बड़ा यूएसपी इसमें यही है कि स्टोर का जो ओनर है वो कस्टमर रिलेशन बना पाएगा, उसके साथ इंटरेक्शन होगा, वो सारे प्रोडक्ट का उसको मार्केट के जो अभी तक जो यूज करते थे, जैसे कि एग्जांपल अभी लेते हैं कि टॉयलेट क्लीनर है या डिश वॉश है, वो आप गूगल पे भी सर्च मार सकते हो कि हार्पिक हो, विम हो या कोई भी ब्रांड का आप यूज कर रहे हो, तो एसिड स्लरी से ही बनता है वो चीज। आज अगर मैं बोलूं कि प्रेग्नेंट लेडी को, या आपने देखा होगा कि सर्टेन एज के या स्किन एलर्जी या जिसको इनहेलेशन में प्रॉब्लम है, तो हम जब टॉयलेट में टॉयलेट क्लीनर लगाते हैं तो तुरंत ही हमको स्मेल में इरिटेशन होता है, इनहेलेशन में प्रॉब्लम होता है। हाथ में भी हम नहीं ले सकते, जलता है क्योंकि एसिड स्लरी रहता है। हमारे जो बाथरूम या टॉयलेट में जो भी फॉसेट्स रहते हैं या नल रहते हैं या जो भी रहता है तो वो भी बिगड़ जाता है एसिड की वजह से, महंगे लगाए हैं फिर भी। तो ये सारी चीजों का हम लाइव डेमो, उसको अगर मैं बताऊं कि स्टोर में कोई बंदा टॉयलेट क्लीनर लेने आया और उसको तुम चख के बताते हो कि ये देखो हमने टेस्ट किया, ये टॉयलेट क्लीनर 100% नेचुरल है, मुंह पे भी लगा सकते हो, यानी 100% आप उसको सेटिस्फाइड करके ही भेजोगे। हमने, और हमारे एक एक प्रोडक्ट का यूनिक यूएसपी है। हमने शू पॉलिश भी ऐसा बनाया है कि कोई भी कलर के जूते हो, कोई भी कलर के सैंडल हो, वो ब्लैक और रेड ही जो शू पॉलिश आती है केमिकल बेस्ड, और जो दाग धब्बे करती है अपने, और हम दूर ही रखते हैं वो चीज, घर के बाहर रखते, जूते के रखते वहां पे। हमने शू पॉलिश भी राइस ऑयल से क्रिएट किया हुआ है, 100% नेचुरल राइस ऑयल से बनता है। जस्ट यू हैव टू स्प्रे, डीओ की तरह आप खाली शूज पे स्प्रे मार के आप कपड़ा लगा दो, 6 दिन तक वो
पूरा शाइनी रहेगा, वो कोई भी मटेरियल के शूज हो या सैंडल हो, ये, और वो भी यूनिसेक्स है, यानी कि लेडीज भी यूज कर सकती है, जेंट्स भी यूज कर सकता है। आज तक आपने देखा कि लेडीज ने कभी भी चप्पल को कभी कोई शाइनर या कोई भी पॉलिश लगाया, वो हमेशा बेचारी कपड़ा लगाती है, नॉर्मल कपड़ा ही लगाती है। तो दूसरा के कैनवास वॉश है, यानी कि जो स्पोर्ट्स शूज और जो जिम में जाते हैं लोग या जनरल कैनवास शूज जो रेगुलर में पहनते हैं, तो उनके स्पोर्ट्स शूज है, तो उनको वॉश करने के लिए भी हमने 100% नेचुरल साबूदाना के माड़ में से हमने एक प्रोडक्ट डेवलप किया हुआ है। हैंड वॉश है तो वो भी 100% नेचुरल है। तो उस कार फ्रेशनर्स है जो हम जनरल हमने बहुत सारे वायरल वीडियोस देखे कि अल्कोहलिक या हम एरोसोलिक स्प्रे मारते तो उसमें ब्लास्ट होता है, या काफी सारे आज की तारीख में वो चीजें हो रही है। तो 100% नेचुरल कार फ्रेशनर्स भी हमने डेवलप किए। इंदुलेखा जैसा मल्टी विटामिन या मल्टी अलग अलग तेलों का मिक्सचर करके हमने हेयर ऑयल भी ऐसा डेवलप किया है जो हम एकदम लीस्ट MRP पे हम बेच रहे हैं, उसका भी हमें बहुत सारा रिस्पॉन्स मिला है। शैम्पूज है, काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट है, पर मेन चीज है कि USP के बेसिस पे ही हम विन हुए। और एज अ कंपनी, एज अ ओनर, मैं स्पष्ट आपको बता देता हूं कि हम कोई भी लालच नहीं देते कि हम ये कर देंगे ना वो कर देंगे। प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंस हमारे में है, प्रोडक्ट क्वालिटी बेस बनाया है, प्रोडक्ट को बेचना और प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने का सिखाएंगे हम, पर प्रोडक्ट अल्टीमेटली बेचना तो आपके स्टोर से ही है, आपका धंधा आप ही चलाओगे, उसके अंदर हम कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब्सक्राइबर बेस्ड बिजनेस है फ्रेंड्स, एंड जितनी भी इंक्वायरीज आज आई हैं हम कोशिश करेंगे सारी की सारी आज ही रीच आउट कर सकें, और अगले हफ्ते में नीरव जी आपसे टाइम लेंगे। We'll connect all our investors with you. It's a good opportunity. बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट से शुरू होता है, रिपीट प्रोडक्ट है, सब्सक्राइबर बेस प्रोडक्ट है, एंड इट्स अ वैल्यू प्रोडक्ट। So friends, if you're keen, please write on the hotline, और हम आपका ये कॉल नीरव जी की टीम से कराएंगे। एंड जो भी पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जिसे नीरव जी ने बताया, वो हम सब अपने इन्वेस्टर के साथ शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच नीरव जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए अपने प्रोडक्ट, एंड वी गेट यू some of our investors जो आपसे बात करना चाहते हैं on a one-to-one discussion. Thank you so much, Neeraj. Thank you so much. Thank you so much. Now the next brand which we are represent, it's Dalchini. They have their headquarters in Noida. Dalchini is a platform for affordable anytime and instant food via a automated kiosk, and they have some big names corporates association with them like Genpact, Vivo, Reliance, Paytm, and we invite Mr. Praveen, who will be talking about this great brand where you can start your business as low as 1 point. Thank you so much, Praveen, for joining in. Over to you. Hi, Archana. Thank you for inviting us here. Hello, everyone. Hope you all are doing well and safe. So Dalchini is India's first 24/7 instant snacking store. So we are India's largest community and chain of smart vending machines, where we are deploying our smart vending machines in sites like corporate offices, colleges, hotel, hospitals, co-working spaces, apartments and all. And through these vending machines, we are providing products like snacks, beverages, chocolates, biscuits, plus fresh food. So in fresh food, we have products like paratha, poha, vada pav, cutlet, sandwiches, idli, uttapam, rajma chawal, chole chawal, kadhi chawal, this kind of stuff, and all are fresh. We refill all of these products daily in the vending machine from home food vendors. So like Dalchini, so why Dalchini? So vending machine India में काफी टाइम से हैं, like you must have seen vending machine at airports and metro stations, जो कि कैश एंड कॉइन वाली वेंडिंग मशीन होती है, जहां पर यू कैन इंसर्ट 10 rupees 20 rupees नोट एंड यूल गेट द प्रोडक्ट. So what we have changed in vending machine, like we added our own hardware and software in the vending machine to make them smart. So these vending machines are smart vending machine where like these machines can be monitored remotely. So we can monitor all of our vending machine remotely from a laptop or desktop. And we have added large varieties in this vending machine. So like I have told you, we are providing snacks, beverages, chocolates, plus fresh food also. We are providing cut fruits in the vending machine as well. So like we have changed these two things in the vending machine to make them smart and to offer large varieties to the customers. So like we have started 3 years back from Noida. 3 साल पहले हमने नोएडा से शुरू किया था with one vending machine,
and now we are in 10 cities in India with 400 plus vending machines. अभी हम 10 शहरों में ऑपरेट कर रहे हैं 400 प्लस वेंडिंग मशीन के साथ. एंड ये जो वेंडिंग मशीन है मोस्टली जस्ट जितने बिग कॉर्पोरेट्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, होटल्स हैं, वहाँ ये इंस्टॉल्ड हैं. So like this startup was started by Prerna Kalra and Vidya Bhushan. Both are ex Paytm employees. So Prerna Kalra was like Paytm की one of the early employees में से हैं जिन्होंने Paytm को build किया from 0 to 250 million users. Vidya Bhushan was also from Paytm. He was the head of offline payments. He was also part of Jio team and Ericsson team prior to Paytm. So they both have started this venture in 2017. And then now we have like they're in 10 cities I told you. So now coming to the the early our journey so far. So we have like I've told you, in our first year we are operational in Delhi NCR only. So we have started from Noida and we expanded to Gurgaon and Delhi as well. So हमने नोएडा से शुरू करके दिल्ली and गुड़गांव and दिल्ली में शुरू किया, and we have reached 50 vending machines in first year. And like we have closed our first seed funding as well. So हमने first अपना seed round है, investment round है, वो अपने close किया to expand in more cities. Next year we have started our franchisee model where like जहाँ हम कुछ franchisee partners का partner करते हैं multiple cities के अंदर, and उनके through में expand कर रहे हैं in pan India में. So हमने अपना operations भी हमने शुरू किया दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव से बाद चंडीगढ़, मुंबई, मोहाली, in पुणे. Next year हमने और भी cities में expand किया apart from these cities in Bangalore, Goa, in Jamnagar in Gujarat, and like we have onboarded many D2C brands to like promote their products through this vending machine. Plus we have like added we have raised our pre-series A round of funding, and we have onboarded Ajay Kaul. He was the CEO of Domino's India for the last 10 to 15 like 12 years, and वो आज दालचीनी के chief advisor हैं. So he is the core member of our team. Like he is guiding us to like expand this business pan India in the franchisee model as well. So now what is for the customer? So customer के लिए क्या benefit है vending machine से? So अगर किसी customer को कुछ order करना होता है कभी भी कुछ खाने का, so इधर वो food delivery app use करता है और they use grocery delivery app like Grofers and Big Basket. So दोनों में problem क्या है कि you will have to pay a delivery fee and you will have to wait for your delivery to be like delivered to your home. So like वहाँ पर average जो delivery cost लगता है वो 40 rupees है, and average time जो delivery का है 40 minutes होता है. But with vending machine we are solving this pain point कि जहाँ पर आपको instantly किसी, जैसे मैं starting में first slide बताया कि instantly you can get the product from the vending machine, and वहाँ पर आपको delivery fee भी नहीं pay करना होता. So you'll get the product without paying any delivery fee and without waiting for more than a minute. 1 मिनट के अंदर भी आप सारे जो products है मशीन के अंदर से purchase कर सकते हैं अपने नियर बाय जो भी vending machine है वहाँ से. So ये कस्टमर के लिए काफी एक बेनिफिशियल एक वैल्यू एडेड पॉइंट है जो कि जहाँ भी मशीन लगाते हैं वहां पर उनको मिलता है वेंडिंग मशीन के थ्रू. सो नाउ अब बात करें वेंडिंग मशीन हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, कहाँ कहाँ हमने वेंडिंग मशीन लगाई है. मैंने बताया कि वेंडिंग मशीन हमने ऑफिसेस के अंदर, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर से, कॉलेजेस हैं, पीजीज हैं, हॉस्टल्स हैं, वहाँ लगाए हैं, हॉस्पिटल्स में लगाए हैं, वहाँ लग सकते हैं, मल्टीपल हॉस्पिटल्स में लग सकते हैं, जो नर्सिंग होम्स हैं या कोई बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वहाँ लग सकते हैं. बसेस के अंदर, टैक्सीज के अंदर भी हमने मिनी वेंडिंग मशीन हमने इंस्टॉल की है जो कि ऑन द गो एक स्नैकिंग का ऑप्शन देते हैं. कोई कस्टमर अगर बस में ट्रैवल कर रहा है या ओला उबर में ट्रैवल कर रहा है तो वहाँ भी हमने मिनी वेंडिंग मशीन लगाई है जहाँ पर वो उस वेंडिंग मशीन से भी जो प्रोडक्ट है परचेस कर सकते हैं. हाउस होल्ड में, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में हमने मशीन लगाई है, जैसे किसी बिल्डिंग के अंदर के लॉबी में हम मशीन लगाते हैं तो कोई भी अगर जो का रेजिडेंट है, जो भी वहाँ पर लोग रहते हैं, उनके लिए एक ऑप्शन हो जाता है कि उनको इस जो कोरोना के टाइम में, पेंडेमिक के टाइम में, इसमें उनको बाहर ना जाना पड़े, उनको अपने बिल्डिंग के अंदर, सोसाइटी के अंदर उनको एक ऐसा ऑप्शन मिल जाता है जहाँ से वो जाके अपना फूड भी ले सकते हैं. If they want to buy Maggi, milk, snacks, beverages or any grocery items as well, so वहाँ से वो vending machine से purchase कर सकते हैं without touching the vending machine as well. So we have added contactless solution in this vending machine also after this pandemic came. So अगर किसी कस्टमर को अगर मशीन को टच नहीं करना, विदाउट टचिंग द वेंडिंग मशीन उन्हें सामान खरीदना है, सो देन ऑल्सो ही कैन डू दिस. उनको बस दालचीनी का ऐप यूज करना होता है एंड वो मशीन से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं. जैसे मैंने बताया कि वी ऑफर वैरायटी ऑफ फूड्स एंड बेवरेजेस अंडर वन रूफ. सो हम इसमें मील्स, जैसे फ्रेश एंड फ्रोजन दोनों तरह के होते हैं प्रोडक्ट्स. इसमें मील किट्स होते हैं, मील बॉक्स होते हैं कि किसी को अगर एक फुल मील चाहिए राइस कॉम्बो का या कोई चपाती कॉम्बो का तो वो उसे ले सकते हैं. वो
रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे इसमें मैगी होता है, इसके अंदर उपमा होता है, पोहा होता है, जो कि रेडी टू कुक होते हैं। वहाँ पर बॉइल्ड वाटर डालिए, आप बॉइल्ड पानी डालिए एंड आपको वो विद इन अ मिनट वो तैयार होता है कंज्यूम करने के लिए। पैकेट स्नैक्स होते हैं, प्लस बेवरेजेस होते हैं, हेल्दी जूस, ड्रिंक्स, योगर्ट, स्वीट्स जैसे गुलाब जामुन, पेड़े, रसगुल्ले, ये सब भी उसके अंदर, स्मूदीज होते हैं, शेक्स होते हैं। सो वेराइटीज काफी हैं जो कि वेंडिंग मशीन के थ्रू ऑफर कर सकते हैं कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को। जो अब बात करते हैं मार्केट अपॉर्चुनिटी की। वेंडिंग मशीन का मार्केट कितना बड़ा है साइज में एंड कितने लोकेशन हम इंस्टॉल कर सकते हैं इंडिया के अंदर। सो इन इंडिया वी हैव मोर देन 10 लाख पॉसिबल लोकेशन जहां पर हम वेंडिंग मशीन को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें सारे वर्क प्लेसेस हो गए, जैसे इंडिया के अंदर कॉर्पोरेट्स हैं, ऑफिसेज हैं, अपार्टमेंट्स हो गए हैं, पब्लिक स्पेसेस जैसे मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन वगैरह हैं, एयरपोर्ट्स हैं। मोबिलिटी में जैसे बस हैं, कैब्स हैं, ट्रेन कोचेस के अंदर अब वेंडिंग मशीन, मिनी वेंडिंग मशीन लगती है जो कि लगा सकते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है, जैसे कॉलेजेस है, होटल्स है, हॉस्पिटल्स में मशीन लगाती है। वी हैव डिप्लॉयड मेनी वेंडिंग मशीन इन हॉस्पिटल एज वेल। काफी हॉस्पिटल्स के अंदर हमारी वेंडिंग मशीन ऑलरेडी रनिंग है, जो कि पेंडेमिक के टाइम पे भी वो चल रही थी, जो कि कस्टमर्स को एक वैल्यू सर्विस प्रोवाइड कर रही थी, क्योंकि कैफेटेरिया जो होता है वो इस टाइम पे नहीं चल रहा था और वो एक लिमिटेड टाइम तक ओपन होता है। बट वेंडिंग मशीन जो है 24/7 चलती है, अनमैन्ड होती है, किसी की जरूरत नहीं होती वहां पर रहने की। कोई भी पर्सन जाके वेरी इजीली वहां पर वो अपने जो प्रोडक्ट है उसको परचेस कर सकता है विद द यूज ऑफ ए स्मार्टफोन ओनली। अपने स्मार्टफोन से वो अपना जो भी डिजिटल पेमेंट ऐप जो यूज करता है वो एक यूजर, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, भीम यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी यूज करता है उसके थ्रू वो प्रोडक्ट को परचेस कर सकता है विद इन अ मिनट ओनली। सो ये एक मार्केट अपॉर्चुनिटी जो है वो काफी ह्यूज है। हमने जैसे बताया कि वी हैव स्टार्टेड विद वन वेंडिंग मशीन, नाउ वी हैव 400 प्लस वेंडिंग मशीन, 400 प्लस वेंडिंग मशीन 10 शहरों के अंदर है, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, बॉम्बे, बैंगलोर। एंड वी आर पार्टनर विद फ्रेंचाइजी इंडिया टू एक्सपैंड इन मोर सिटीज थ्रू फ्रेंचाइजी पार्टनर्स। सो जो एक मार्केट अपॉर्चुनिटी है, एक स्कोप है, वो काफी ज्यादा है। एंड आफ्टर पेंडेमिक जो डिमांड है वेंडिंग मशीन्स की वो इंक्रीज ही हुई है। लोगों को अब ये समझ में आ रहा है कि कॉन्टेक्टलेस सॉल्यूशन जो ही एक सॉल्यूशन होने वाला है आने वाले सालों में, जो कि कैफेटेरिया को, छोटे कैफेटेरिया को, टक शॉप को रिप्लेस कर सकता है। जो कि लेट सपोज आपको टक शॉप ओपन करना है कहीं पर, सो यूल हैव टू गेट अ बिग स्पेस, यूल हैव टू हायर अ पर्सन जो कि वहां पर दिन भर रहेगा, वहां पर वो कस्टमर को देखेगा, वो सब इन्वेंटरी देखेगा, सब कुछ देखेगा। बट वेंडिंग मशीन के केस में क्या है कि ये 24/7 है। फर्स्ट थिंग, ये अनमैन्ड है, किसी के वहां खड़े रहने की जरूरत नहीं है। आप एक पर्सन हायर कर सकते हैं जो कि आपकी 5 से 6 वेंडिंग मशीन को ऑपरेट कर सकता है, एंड वो भी रिमोटली। वो बस एक बार जाएगा, रिफिलिंग करेगा एंड देन वापस आ जाएगा। एंड देन ही हैज अ ऐप, एक ऐप होता है उनके पास जिसके थ्रू वो मशीन्स को और मैनेज करते हैं, अपडेट करते हैं और मॉनिटर करते हैं कि मशीन में क्या इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट है, क्या उसके अंदर रिफिल करना है, कितना स्टॉक रह गया है। सो इससे जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो आ जाती है। सो जो भी मैंने बताया स्टार्टिंग में ही कि दालचीनी ने टेक्नोलॉजी ऐड की वेंडिंग मशीन में, वो इसलिए की कि जो पूरा सॉल्यूशन है वो स्मार्ट बन सके, एफिशिएंट बन सके, जो ऑपरेशंस में एफिशिएंसी वो आ सके। किसी को जो हमारा जो बिजनेस करने का एक जो वे है उसमें एफिशिएंसी आ सके। दैट्स व्हाई वी एडेड आवर ओन सॉफ्टवेयर एंड एप्स इनटू द सिस्टम। सो जैसे बताया कि दालचीनी वी सर्व 6 मील्स अ डे। सो अपार्ट फ्रॉम ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर आइटम्स, हम जो इवनिंग स्नैक्स हैं, जो ब्रेकफास्ट के और लंच से पहले जो स्नैक्स होते हैं, जैसे समोसे, ब्रेड पकोड़े, पनीर पकोड़ा, ऐसे छोटे मंचीज स्नैक्स होते हैं, क्विक स्नैक्स कहते हैं जिसे हम, जो कि कस्टमर जाके टी टाइम के टाइम वो लेता है, खरीदता है, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं विद फ्रेश फूड। सो एक इसमें जो कस्टमर के लिए जो फैसिलिटी होती है वो कन्वीनियंस तरह का भी काफी रहता है कि 24/7 अवेलेबिलिटी रहती है आइटम्स की, जो कि कस्टमर जाके कभी भी, अगर किसी कस्टमर को रात को 2 बजे भी कुछ चाहिए अपने ऑफिस के अंदर, अपने हॉस्टल के अंदर, कॉलेज के अंदर, होटल के अंदर, तो जाके वो ले सकता है विद इन मिनट। इसमें एक डिस्कवरी बहुत इजी रहता है कि कस्टमर के पास अपना ऐप भी होता है, अगर चाहे तो ऐप यूज कर सकता है, और ऐप के थ्रू भी वो जो भी मशीन के अंदर सामान लगा हुआ है वो उसको एक्सप्लोर कर सकता है कि क्या सामान मशीन के अंदर अभी लगा हुआ है। चॉइसेस काफी है यहाँ पर, जो वैरायटी में बताया वैरायटी काफी है यहाँ पर। स्नैक्स, बेवरेजेस, फ्रेश फूड, बिस्किट्स, चॉकलेट, स्वीट्स, डेजर्ट्स, काफी है यहाँ पर चीजें। इंस्टेंट है ये पूरा सोल्यूशन, मतलब किसी जैसे बताया कि किसी पर्सन को कुछ परचेज करना है तो वो इंस्टेंटली जाके वो ले सकता है विदाउट वेटिंग फॉर द डिलीवरी टाइम। वो आपको डिलीवरी टाइम का वेट नहीं करना, उन्हें किसी डिलीवरी चार्ज पे नहीं करना, वो जाके वेंडिंग मशीन से वो जो प्रोडक्ट है परचेज कर सकते हैं। सो नाउ कमिंग टू द लाइक क्लाइंट बेस जो है दालचीनी का। सो लाइक जैसे मैंने बताया कि वी आर देयर इन लाइक ऑल द बिग कॉर्पोरेट। सो हमारे जो मशीन है वो इंस्टॉल्ड है ENY, गाना, टाटा, TCS, रिलायंस,
डेल, वीवो, टाइम सेंटर, पेटीएम, स्नैपडील, जैसे हॉस्पिटल देखेंगे आप तो वी हैव मशीन्स इन फोर्टिस हॉस्पिटल इन गुड़गांव एंड नोएडा. We have machines in like colleges, education institutes like Akash. We have machines in co-working space like SmartWorks, Stanza, 91 Springboard, CoWorks. We have machines in hotels like Courtyard by Marriott, Lemon Tree, Oyo. So जो client base है, we have machines. We also have machines in government organization like Niti Aayog, Government of India, and NSDC. Both are in Delhi. So जो client base अगर आप देखते हैं तो काफी एक मेजर जो ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनीज है या बड़े हॉस्पिटल्स हैं, कोवर्किंग स्पेस है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सब में वेंडिंग मशीन हमने इंस्टॉल डिप्लॉय की हुई हैं एंड वी आर एक्सपेंडिंग वेरी फास्ट. सो फॉर दिस वी नीड फ्रेंचाइजी पार्टनर्स जो कि मल्टीपल सिटीज में आ सके एंड हमारे साथ आके वो अपना फ्रेंचाइजी दालचीनी का जो वेंडिंग मशीन बिजनेस है वो अपनी सिटी में सेटअप कर सके, स्टार्ट कर सके. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द की एसोसिएशन विद द ब्रांड्स. सो दालचीनी एक प्लेटफॉर्म है ब्रांड्स के लिए भी. सो वी ऑफर लाइक मेनी ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटी प्रमोशन फॉर द ब्रांड्स एज वेल. सो जितने भी बिग एफएमसीजी ब्रांड्स है जैसे अमूल, ब्रिटानिया, कोका कोला, डाबर, आईटीसी, मार्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, ये सारे हमारे एस्टेब्लिश्ड एफएमसीजी ब्रांड है जो ऑलरेडी हमारे साथ काम कर रहे हैं. जो अपकमिंग D2C ब्रांड्स हैं जैसे बीआरबी, डोले, डेप्रो, गोग्रव, लव इट, कारी कारी, प्रिनिटी, हेल्दी कंपनी. सो ये न्यू ब्रांड्स हैं जो कि दालचीनी ऑनबोर्ड हुए हैं और उन्होंने अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो दालचीनी वेंडिंग मशीन के थ्रू सेल कर रहे हैं मल्टीपल सिटीज के अंदर. सो इसमें जो ब्रांड के लिए भी जो ROI है, जो उनके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पर कस्टमर है, जो रेवेन्यू है, वो काफी ज्यादा हो जाता है इस वेंडिंग मशीन के थ्रू. इनको कम से कम टाइम में विद वेरी लेस इन्वेस्टमेंट वो मल्टीपल सिटीज के अंदर अपने जो प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं थ्रू दिस वेंडिंग मशीन. So as you can see, we have been featured in many like big media outlets. Like we have been there in Times of India, Economics Time, Financial Express. You can see Amitabh Kant, of CEO of Niti Aayog, inaugurating our vending machine in Niti Aayog. So एक जो मीडिया कवरेज है वो भी काफी ज्यादा है. If you search on Google about दालचीनी, so आपको मल्टीपल जो मीडिया क्वेरीज है, फोटोज, वीडियोज आपको दालचीनी के बारे में मिल जाएंगे जो कि हमने स्केल किया फ्रॉम वन वेंडिंग मशीन टू हेयर अभी आज तक का, एंड कैसे हम एक्सपैंड कर रहे हैं, क्या मॉडल है हमारा, वो सब कुछ आपको यू कैन सी एवरीथिंग ऑनलाइन. यू कैन चेक आवर सोशल मीडिया पेजेस एज वेल. अगर आपको दालचीनी का इफ यू वांट टू सी, यू कैन चेक आवर फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर पेज टू सी द रिव्यूज एंड सी द like the offering we are providing to our customers and clients. So now the main question is आप कैसे start कर सकते हैं? How can you start in your city? So जो इसमें जो in your let's suppose you are from Jaipur or you are from Lucknow and you want to start there, or you are from Kolkata. So जो initial investment है वो as low as 1.5 lakh rupees है. आप 1.5 लाख रुपए से एक वेंडिंग मशीन से आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने सिटी के अंदर. इसके लिए आपको जो एक रिक्वायरमेंट रहती है वो रहती है कि एक लोकेशंस की सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है. सो इनके अगर आपके पास लोकेशंस है आपकी सिटी के अंदर, यू कैन स्टार्ट देयर. अगर आपके पास लोकेशन नहीं है तो देन दालचीनी कैन ऑल्सो हेल्प यू इन गेटिंग सम लोकेशंस. अगर आप कहते हैं कि हमारे पास लोकेशन नहीं है, हम कहाँ से स्टार्ट करें, बट वी वांट टू स्टार्ट, सो दालचीनी आपको लोकेशंस भी प्रोवाइड कर सकता है आपके सिटी के अंदर जहाँ पर कि आप वेंडिंग मशीन्स को लगा के उसे आप स्टार्ट कर सकते हैं मैनेज करना. सो इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 1.5 लाख रुपीज़ का होता है जो कि वेंडिंग मशीन का कॉस्ट है. इसके बाद आपका जो वर्किंग कैपिटल है जो कि आपको मैनेज करने में आएगा वो दो तरह का होता है. एक आपको डिलीवरी पार्टनर हायर करना होता है जो कि 10 से 12 हज़ार रुपये सैलरी लेता है पर मंथ का, और एक आपको छोटा सा स्पेस चाहिए होता है जहाँ पर आप मशीन का स्टॉक इन्वेंट्री रखेंगे. So generally we advise our partners कि initially they can use their own space or they can use rent out a very small space for initial 5 to 10 vending machines, जिससे कि कॉस्ट कम लगे एंड जो उनका रेवेन्यू है, जो प्रॉफिट है वो ज्यादा है. सो ये दो ही तरह के जो मेजर जो कॉस्ट है आते हैं वेंडिंग मशीन बिजनेस को रन करने में, जो डिलीवरी बॉय की फीस एंड एक वेयर हाउस का स्पेस. एंड आपको दालचीनी कैसे हेल्प करता है पार्टनर्स को. सो जैसे हमने बताया कि दालचीनी विल गिव यू लोकेशंस एज वेल. अगर आपका लोकेशन नहीं है हम आपको वेंडिंग मशीन देते हैं. वी विल गिव यू द टेक्नोलॉजी, द एप्स एंड सॉफ्टवेयर, विल गिव यू द ट्रेनिंग. दालचीनी आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है आपको और आपकी टीम को कि मशीन को कैसे रन करना है, कैसे मैनेज करना है, ऐप कैसे यूज करना है, डैशबोर्ड कैसे यूज करना है, डेटा को कैसे देखना है. तो इन सब में दालचीनी टीम आपको ट्रेनिंग देती है. दालचीनी आपको वेंडर सपोर्ट भी देता है कि मान लीजिए आपने बोला कि ठीक है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बट मैं जो प्रोडक्ट्स है कहाँ से लाऊंगा. सो दालचीनी आपको जितने जो भी आपके सिटी के अंदर लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स वेंडर्स हैं उनसे आपको टाई अप करा देता है, सो दैट कि आपको डे वन से ही आपको अच्छे मार्जिन पे जो प्रोडक्ट्स है मिल जाएं और जो कि आप मशीन में लगा सकें.
इसके बाद जो भी ऑपरेशनल सपोर्ट है, वेयर हाउस मैनेजमेंट है, वो सब दालचीनी हेल्प करता है कि कैसे आप डिलीवरी सप्लाई चेन सेटअप करें अपना, कैसे डिलीवरी पार्टनर को हायर करें, उसे कैसे रिफिल करेगा मशीन के अंदर डेली बेसिस पे, उसमें दालचीनी आपको हेल्प करता है। दालचीनी आपकी मार्केटिंग एंड प्रमोशन में भी हेल्प करता है कि आपको जो प्रोडक्ट्स हैं, आप उस सिटी के अंदर जहाँ आप हैं वहाँ पर आपकी प्रमोशन मार्केटिंग या आप कुछ ऑफर रन करना है आपकी वेंडिंग मशीन्स पे, सो उसमें भी दालचीनी आपको हेल्प करता है। दालचीनी विल ऑल्सो हेल्प यू इन गेटिंग हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स। सो दालचीनी, जैसे मैं बताया कि दालचीनी आपको लोकल डिस्ट्रीब्यूटर और वेंडर से भी टाई अप कराता है, प्लस दालचीनी के पास खुद भी अपने प्राइवेट लेबल स्नैक्स हैं जिसपे आपको 30% तक का मार्जिन आपको मिल जाता है उन प्रोडक्ट्स के थ्रू जो आप सेल करते हैं वेंडिंग मशीन के थ्रू। सो जो सपोर्ट है वो एंड टू एंड रहता है टू स्टार्ट दिस वेंडिंग मशीन बिजनेस इन योर सिटी। एंड जो दालचीनी में आपको सारी चीजें प्रोवाइड करता है जो कि आपको चाहिए एक वेंडिंग मशीन को सेटअप करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। एंड जो इसका इन्वेस्टमेंट है, जैसे मैंने बताया, वो एज लो एज 1.5 लाख रुपीज है वो वन वेंडिंग मशीन। आप अपने सिटी के अंदर आप 1.5 लाख रुपए से आप एक वेंडिंग मशीन से शुरू कर सकते हैं वेंडिंग मशीन बिजनेस। आपको किसी भी चीज में हेल्प चाहिए, यू कैन ऑलवेज आस्क दालचीनी टू हेल्प। एंड आप अगर if you want to if you have any question, you can contact Franchise India team and then we can connect a one-to-one to discuss the queries and all. Yeah, that's it from my side. So we can take the question right now. Thank you so much, Praveen ji. Ek do questions quickly, which I will take from our audience. And a couple of questions which I also had in my mind. When we talk about operating expenses, you have taken 30% as an average margin. And apart from that, you have taken some expenses towards the payment gateway. आपने इसमें रेंटल कंपोनेंट इंक्लूड नहीं किया गया. यू वांट टू मे बी रिफ्लेक्ट अपॉन दैट? या सो रेंटल वाला जो कंपोनेंट है ना, जो रेंटल वाला है कि रेंट कुछ लोकेशन दो टाइप की होती हैं। कुछ लोकेशन होती है जहां आपको रेंट पे करना होता है क्लाइंट को टू इंस्टॉल अ वेंडिंग मशीन। कुछ लोकेशन है जहां आपको रेंट पे नहीं करना होगा, इनफैक्ट आपको रेंट मिल जाएगा। सो जो लोकेशन फर्स्ट काइंड ऑफ लोकेशन है वो है मॉल्स, वो है एयरपोर्ट्स, वो है मेट्रो स्टेशन, जहां पर आपको रेंट पे करना होता है अथॉरिटी को उस जहां पर मशीन लगा रहे हैं। जैसे मैंने बताया, हमारा जो फोकस जो एरिया है, जो सेगमेंट रहता है, वो बेसिकली ऑफिसेस, कॉलेजेस, होटल, हॉस्पिटल्स, वर्किंग स्पेस रहता है जहाँ पर आपको रेंट नहीं पे करना पड़ता, वहाँ पर आपको रेंट मिल जाता है। सो ये एक रेवेन्यू पार्ट है। कोई अगर पर्सन कहीं लेट्स सपोज कोई अगर लखनऊ में स्टार्ट करता है या आसाम में या सिलीगुड़ी में स्टार्ट करता है, सो वहाँ पर वो अगर किसी ऑफिस में मशीन लगा रहे हैं अगर पार्टनर, सो वहाँ पर दे कैन आस्क फॉर रेंट कि ओके हम विल चार्ज यू 3000 रुपीज रेंट टू इंस्टॉल माई वेंडिंग मशीन देयर। सो इसके लिए वेंडिंग मशीन के जो बेनिफिट्स है वो उनको बता सकते हैं कि ये अनमैन्ड है, कॉन्टैक्टलेस है, इंस्टेंट 24/7 है, लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है जो कि उनको मिलता है। तो जो रेंटल वाला पार्ट है ना, वो रेवेन्यू में आता है, ये कॉस्टिंग में नहीं है, ये उनके रेवेन्यू में है कि जहाँ पर उनके कुछ लोकेशन ऐसे, दालचीनी कुछ लोकेशन ऐसे आपको प्रोवाइड कर सकता है जहाँ पर आपको रेंट मिल सकता है जो आपके रेवेन्यू में ही आएगा। So what you're saying is most of these locations are ideally जो भी locations पे खोलेंगे these will be rent free locations and correct. As a company आप भी assist करेंगे, you already have tie up with a lot of corporates and other institutions. Yeah, we have tie up with many corporates. Correct. Sure. These can be placed. दूसरा क्वेश्चन मेरा था आपकी डिलीवरी के ऊपर, बिकॉज ये आपने बोला ऐप के थ्रू ऑपरेट करता है, एंड इफ इट इज ऑपरेटिंग थ्रू एन ऐप, are we connected or are we on Zomato or Swiggy, and are there any delivery charges which has to be taken into consideration? I'll tell you. So basically there are no, first thing, there is no delivery charges like for जिसको कस्टमर को पे करना हो, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं होता। ऐप के थ्रू ऑपरेट का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए किसी एक ऑफिस के अंदर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, मशीन लगी ग्राउंड फ्लोर पे, एंड जो पर्सन है एम्प्लॉय है वो 7th फ्लोर पे है। सो देन ही कैन यूज दालचीनी ऐप टू सी द प्रोडक्ट्स ऑफ द वेंडिंग मशीन एंड वहीं से वो ऑर्डर प्लेस कर सकता है। एंड देन जब वो वेंडिंग मशीन पे आके अभी जाएंगे वहां पर वो अपना जो ऑर्डर है वो कलेक्ट कर सकते हैं। सो ऐप का जो कन्वीनियंस है वो ये है कि कस्टमर अगर कहीं गए, आपने ऐप ओपन किया, नियर बाई वेंडिंग मशीन आपकी ऐप लोकेट कर देगा कि आपके आसपास कौन सी वेंडिंग मशीन है, एंड वहां पर वहीं ऐप से ही आप देख सकते हैं कि मशीन में क्या अभी सामान लगा हुआ है, एंड यू कैन प्लेस ऑर्डर फ्रॉम ऐप इटसेल्फ एंड देन यू कैन गो टू द वेंडिंग मशीन टू कलेक्ट योर प्रोडक्ट। सो ऐप जो है कस्टमर कन्वीनियंस के लिए ही है to place order from anywhere. Like you can just open the app, like you can allow the location permission, and then you can see the vending machine nearby. And it's app जो help करता है contactless ordering में भी help करता है। You can use app for contactless ordering. अगर आपको मशीन पे जाके मशीन पे स्क्रीन लगा है उसको टच नहीं करना, so you can use दालचीनी app to place the order and you can go to the vending machine to pick up a product. That's it. You will not have to touch the vending machine screen there. Sure.
And is there any specific equipment which is required to heat the fresh product? जैसे आपने कुछ food की बात की है. Is there any equipment जो heat करने के लिए required? जी. So maximum जो location जो बताया मैंने आपको जहाँ पर मशीन लगाते हैं वहाँ पर माइक्रोवेव जो है पहले से ही मेजॉरिटी लोकेशन में इंस्टॉल्ड रहता है वहाँ पर मशीन के पास. बट कुछ लोकेशन जहाँ पर आप मशीन लगाना चाह रहे हैं एंड वहाँ पर माइक्रोवेव नहीं है, so then you can place your own microwave there. So generally what we do, you can ask for a security deposit for the microwave from the client and you can place a microwave there along with the vending machine. So that कि कोई कस्टमर अगर फ्रेश फूड जैसे राजमा चावल है वो मशीन से अगर परचेस करता है, so they can heat in the microwave for 30 seconds or 60 seconds and then they can consume it. Sure. So the only equipment required is microwave. All right. So I'll take one question from Mr. Samit Mishra ji. He's asking on the life of these vending machines, annual maintenance कितना होता है और जब आपका contract खत्म हो जाता है उसके बाद इन machines का क्या होता है? You know, is there a buyback policy which the company has? I'll tell you. So first thing, जो मशीन की जो लाइफ होती है वो जनरल जो लाइफ होती है 8 से 10 साल होती है एक वेंडिंग मशीन की. एक वेंडिंग मशीन जो लाइफ होती है मैं आपको बताता हूँ. एक इफ यू जस्ट सर्च अबाउट द वेंडिंग मशीन ना, सो वेंडिंग मशीन में जनरली 3 पार्ट्स होते हैं. एक होता है मशीन के अंदर लगा हुआ मोटर जो कि कॉइल्स को रोटेट करता है, एक होता है कंप्रेसर जो कि कूलिंग करता है, एंड एक होता है हमारा स्क्रीन जहाँ पर कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है. दैट्स इट. इसके अलावा वेंडिंग मशीन के अंदर कोई पार्ट नहीं होता जो कि जहाँ पर कुछ हमें मेंटेनेंस का जरूरत पड़े, जहाँ पर कुछ फ्लॉ आए या कुछ एरर आए जो कि हमें ठीक करना हो रेगुलरली. सो जो वेंडिंग मशीन में 3, जैसे सर ने पूछा वेंडिंग मशीन के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में. सो मेंटेनेंस जो है हम क्या करते हैं, वी फॉलो अ सर्विस प्रोटोकॉल जहाँ पर हम हर 3 महीने में वेंडिंग मशीन की सर्विसिंग करते हैं. कुछ अगर उसमें क्लीनिंग है, कुछ उसमें देखना है, कुछ हम चेक करते हैं कुछ में फ्लॉ तो नहीं है, सो दैट की वेंडिंग मशीन विदाउट एनी एरर चलती रहे. सो जो मैंने बताया कि वी हैव इंस्टॉल्ड आवर फर्स्ट वेंडिंग मशीन इन नोएडा 3 years बैक, वो मशीन अभी भी विदाउट एनी एरर चल रही है. कोई उसमें फ्लॉ एरर नहीं आया है क्योंकि उसकी हम सर्विसिंग हर 3 महीने में करते हैं सारी वेंडिंग मशीन की. जो मेंटेनेंस वाली पार्ट है, अगर कभी ऐसा हुआ कि किसी आपके मोटर में या कभी किसी जो स्क्रीन है उसमें कुछ इशू आता है, सो दालचीनी विल हेल्प यू इन गेटिंग रिपेयर्ड और गेटिंग रिप्लेस्ड. सो वी हैव अ टीम देयर इन दालचीनी जो कि आपकी इसमें हेल्प करती है. राइट जी. एक और क्वेश्चन लूंगी विच इज फ्रॉम वन ऑफ आवर पार्टनर्स हैं कैलकाटा से, सुब्रता जी. वो पूछ रहे एरिया फ्रेंचाइज अवेलेबल रहेगा कैलकाटा के लिए? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल. इफ वी आर ओपन टू पैन इंडिया, अगर कोई चाहते हैं कैलकाटा में एरिया पूरा कैलकाटा का फ्रेंचाइजी है ना, सो इट इज अवेलेबल. Like we can talk 1-to-1 with your team. Sure. Thank you so much, Praveen ji. And friends, आप reach out कर सकते हैं. We'll get you connected with Praveen ji. अगर आपको financial चाहिए, working चाहिए, we'll also be happy to share the entire presentation with all of you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, FI team. Thank you. Thank you so much, Praveen, for joining in. Now, the next brand which we are representing for each one of you comes from South, and we invite Mr. Raj Shekhar, who will be talking about Tea Kettle, a leading tea cafe brand. Thank you so much, Raj, for joining in today. Good afternoon. Good afternoon, Archana. Hi, good afternoon, Sonia, and good afternoon, everybody who's connected through this webinar. This is, as she has introduced, this is Raj Shekhar. I'm one of the co-founders of our brand, Tea Kettle and Chai Lijiye. We have started a journey in 2015. Me and another colleague and friend of mine, Sudhir, we both started our business after quitting our jobs in a leading private sector bank. So we started off with Tea Kettle. We primarily started focusing on retail, corporate high tea. By reaching out to corporate companies to cater to their regular requirements for their trainings, conferences, R&R events, and any conferences and stuff like that. So we started off by first unlearning banking, and then started everything about high tea, tea, baking, and all the things associated with high tea. So we set up our kitchen in Hyderabad, and we started our own team. We did
come up with our own recipes, our own product range, with following complete hygiene standards that any would generally require. With quite a number of banks, being back a high tea for banks, and then by getting the opportunity to serve high tea for Reserve Bank of India for all their meetings. And it's been now 3.5 years, or rather close to 4 years now, that we have been serving high tea to RBI to all their important meetings and conferences. And then the next logical step was to go for catering to IT segment. Segment. So we have quite a good number of with a very good feedback about our products, the quality, and we ensure that we don't use any preservatives, no chemical additives, no artificial colors in any of our products. So they are as natural as they can get. And we take their orders, get them done in our kitchen, pack them in our high tea boxes and supply to them. So it's basically packed high tea kind of a thing that we serve to all our corporates. And based on their feedback about the quality and the taste and the general hygiene that we maintain and all, so we started expanding our business on the retail front as well by starting our cafes with Tea Kettle brand. It's only recently that we have started a sub-brand called Chai Lijay, as today's theme is about low-cost opportunities. So let me talk about Chai Lijay, which is a low-cost QSR kind of a model with about 5 lakh investment. Chai Lijay basically is like we have started off with the as I told you, low cost and a high return kind of a model. And as it's about 18,000 crore, largely it is more on the unorganized segment. We are one of those brands which are coming up and then kind of consolidating the market on the organized segment. So we have started off just about 7 months back. We have already signed up a few more in Hyderabad, a few in Andhra region, and we are looking at master franchisee options also. We have already signed up 3 and 2 are ready to sign up. So we are looking at expanding our footprint on a pan-India level. Starting off from our geography of Telangana, and we have already started expanding in Andhra region, and we are looking at having good partners across India, and our vision is to take it forward to making Chai Lijay as a pan-India brand. In the next 2 years' time, we want to be available, or rather we want to be present in every state one outlet in every state. This is our model. Make it a very simple 5 lakh kind of a model. What we would be supporting the franchisees with is we would set up the entire the QSR, the
the interiors part, the fit and finish part. We would also help them in getting the basic equipment that is required to run the store efficiently. And we would support them with respect to the product supply. We have both the raw materials, like we have various tea blends that we support the franchises with, and we also have finished products that we can come up with. We have made the menu also very simple, and the pricing also is very, very attractive for the customer, because chai as such is a very competitive product, and there are quite a good number of brands in the market to choose from. So our idea is to offer quality product at a very affordable pricing. So it's kind of a value for money that we are offering to the customer, and also offer a very good margins for the franchisee. So idea is, like, as I told you earlier, it's a low cost with a high return kind of a business that anybody can start off with. And we also made the process very simple that anybody can handle it. We have kind of made it into a process oriented kind of a thing. So one need not have to worry about having a chai master or a chef or somebody skilled kind of a person who would charge bomb and also make the life very difficult for the franchisee owner to run the business. So we have actually come up with a system, a process, which kind of removes all these difficulties in running the business. If you can just go to the previous slide, please. A couple of slides before this. The support that we would give to the franchisee. Yeah, this one. Thank you. So as I told you, we would also take care of all the product availability. We have, I mean, the franchisee need not have to worry about procuring anything from the market, except for a few things like milk and a few essentials like milk and sugar and stuff like that. Other than that, all the products would come from us directly. So that would ensure that they can expect a good quality raw material or a product to come and to reach them, so that the quality of the products that are made available to the customer doesn't suffer any kind of uncertainty or any kind of problem with respect to continuity with respect to the quality and the taste of it. We've also, as I told you, standardization and quality management. We have very clear system, very process-oriented kind of operation system that we have developed, so that kind of makes life simple for them. We will take care of the promotion part of it. Like we are into digital marketing and stuff like that. So we'll do all the marketing for the franchisee. So we'll take care of that. What the franchisee needs to do is to take up about 100 or 150 SFT space, a shop in a good locality where there is good footfalls. Pay the monthly rental and employ 2 people. We will train them. We will train with respect to, though we have made the process very simple, but still we would train them in doing all the, in making all the products that are there on the menu. Then we would also help them in, as I told you, the setup part, we will help them out. Both the fit and finish part of it. We would also support them with respect to the equipment that are required to run the store, and we would always be there for them, to handhold them,
to guide them, to counsel them in order to make their make their business profitable at the earliest possible. So I think can we go to the next slide, please? I mean, a couple of slides later. So anybody can, given this kind of a difficult situation that we are facing due to the pandemic, there are a lot of people who have lost their livelihoods, who are either lost their jobs or looking at additional source of income. People who are looking for new opportunities and easy to handle, easy to run kind of businesses with low investment, and which has got a very good potential for growth. So this is meant. This is a good opportunity meant for all those people who are looking at good opportunities which can sustain for a longer period. Because tea as such is a product which is a daily requirement product that anybody who steps out of the house would require a good quality cup of tea. That's kind of almost an essential part of everybody's lives these days. And apart from that, when we offer good snacks which are quality and which are also value for money, along with tea, that would be a very good combo. Because these days people have become very, very sensitive about their health, the quality and the kind of things that they're consuming. So we ensure that whatever product that comes out of Chai Lijye brand is thoroughly of quality and definitely would enhance their health than do otherwise. So we are ensuring that all these hygiene standards are properly maintained both at our base kitchen and also at individual stores as well. And so that would kind of give a confidence to the customer as well, that whatever that they consume here in Chai Lijye would definitely go in a long way in boosting their health and the immunity levels. We do also have some products which are kind of immunity boosters because chai as such is supposed to be a good product for anybody to have a liven up their day, and also has got a lot of options for improving their health and immunity levels. To start with, as I told you, I can share one moment, please. If I can share you the financials part of it. This is the income statement. We have actually made a very conservative estimate with respect to the incomes that one can generate out of this business. As you can see, the items marked in yellow are those which are which actually kind of vary with time, but then we have taken a very with respect to the expenses part, we have taken a very higher number. When it comes to the income part, we have actually taken a very conservative number. So if you can see the overall, we have actually put the project cost here as 5,50,000, but we have actually reduced it to 5 lakhs only. And this includes a franchisee fee of 1.5 lakh. And the ROI for the first year is about 149%, because the payback is within 8 months. Whereas the actual experience that we have seen with the outlets that we are currently running,
As I told you, there are 7 outlets that we are currently running. 3 of them have already completed about 5 months, and all the 3 are have reached their break-even. Though the payback is 8 months, but in reality, they have actually reached it within 4 months itself. So we have ensured that the margins are also quite high. I can also share the menu part with you as to, we have made it as a very simple menu, very easy to handle kind of a menu. So here we are projecting the total cost of operations at 10,71,000 for the first year, and total gross income at 18,90,000. So EBITDA will be about 8,19,000, and that would so cover the cost of the initial investment that one would put within the very first year itself. As I told you, 8 months, but it's actually much lower than that. So this is Shekhar ji, we cannot shortly hear you. I about think us. there has So been a little bit problem in your audio. Oh, okay. I think there is a problem with the internet connection here, I think. Hope it is better now. It is now, but I think we've kind of missed a lot of stuff in between. So I will request, if we can share maybe the presentation with all the interested investors. And Sure. friends, I'll take 1 or 2 questions from you, Rajshekhar. So Sure. my first question would be on the locations. Which are the cities that you want to enter? We have somebody from Bihar asking if Bihar is a city where you might be interested to enter. We also have a partner, Mr. Vimal from South, and he's asking also on the locations where you want to enter. So if you can just talk about the cities which are important, and second, if you can talk about the difference between the 2 formats. One is chai liji and the other is tea kettle. Is it just the size and the offering, or there is anything else that you want to add? So quickly we can take that out. Yeah, tea kettle, as I said, the format is different. Of course, the investment size is also different. Tea kettle as such is a dining kind of a thing, where it's a cafe kind of a model, where you have to take up a bigger space, and then there is a dine-in kind of a thing. So the investment that goes in would be higher than chai liji. Chai liji is basically a QSR model. So chai liji would can be handled with about 100 and 150 SFT kind of a space, whereas tea kettle there are a lot of Rajshekhar ji, we cannot hear you. So can I request, friends will share all the information that you need, including the menu which you have asked. And I will put our hotline number. Us hotline pe aap reach out kar sakte hain. We'll get you connected maybe 1-to-1 with Rajshekhar ji. He is facing some network issue. And in the interest of time, maybe we'll like to quickly ask our next panel member to come and present. Rashna, can I request you to kindly invite our panel member? So we invite next brand, which is MadeHub, and we have Mr. Satish Parimal who will be talking about his brand. Satish ji, thank you so much for joining in today. Good afternoon, team. Good afternoon, colleagues, friends, and all participants over here.
So you need any help in PPT? Yeah, I do have my PPT. Is it visible? It's starting. If we can go for full screen, sir. Pardon? Can we just go for full screen? Yeah, sure. Sure. Yeah. So should we start? Yes, sir. Yeah, thanks. So friends, this is the digital platform for domestic staffing management. We are based in Pune, and rapidly we are targeting metro cities and major cities of India. What we are doing, we are providing trained, trusted, reliable and skilled domestic staff on our company role. We are hiring the staff, we are training them, we are doing all documentation formality from our side, we are doing assessment. Then after, they are deployable at various locations as per needs generated from client side. So in that one, we are providing 8 hours, 10 hours, 24 hours services for domestic staff, right from housemaid, cook, chef, babysitter to Japa maid, nanny, attender, caretaker, or elder care. So as I have mentioned, it's technical digital platform. We do have our website, web portals, Android applications, and IPR. Myself is the founder member of this company, and Ms. Vijay is the co-founder of this company. So actually, when you see in this segment, you will find various pains. Means you will not get the right staffing from local market or your nearby reference. Availability of this domestic staff is very rare. They are not managed or they are not getting any platform to come forward and give their services from any corporate or from any established segments. Also having replacement problems, then they're not able to connect with clients and other corporate platforms. So for overcoming with these pains, we do provide solutions. We have platform where all staffings are coming on same platform. We do have bulk availability of various staffs. We are managing them. We are giving replacement support to our client. We are connecting with the clients as well as connecting with the staffs. And obviously, we do have such a drastic, good platform where you can start from hiring to maintaining them on your role, or you can maintain on company role as well. So our services are housemaid, babysitter, cooks, caretaker, Japa maid, elder care. Along with this, we are providing senior citizen care, neonatal care, residential cleaning, corporate cleaning, and housekeeping as well. But primary focus is on domestic staffing. In platforms, we do have our website, we have our client portal, franchise partner portal, and lead management system portal as well. We do have our Android application. From where we are generating the leads, we are maintaining the database. On our client portal, we are generating performance feedback from the client. We are collecting the attendance from the clients. So most of the operational part has been taken care on technology level. So only our franchise has to perform only 20 to 30% of manual work, right? Our Medhub is registered under Startup India. It's ISO platform. Brandmark is taken care with Intellectual Property Act. Then this is NSIC registered, MSME registered brand. About market analysis, you can see there are chances of 50 million domestic staffing placement in India, whereas all market is unorganized. We are providing 4 hours, 8 hours, 10 hours, and 24 hours of services. In USP, we can see we are providing return assurance to our clients. That is 1 year service support. We are taking care of safety and security of the client. We are providing quick replacement support to the client. Our renewals are free. And we are doing all police verification, then documentation part from our side. And customers can connect with us at any time, 24/7 access is there. For the provided domestic staffs, we are providing all PF, PT, and ESIC benefits. We are covering them under WC or insurance policy. We are offering them appointment letter. They are getting salary slip. They are getting payment in accounts. So they are getting all benefits as your corporate employee or private company's employees. How it works? We are getting leads from various platforms, from
portals, from apps, and from website, from referrals, from clients, and online various platforms. We are generating the leads. Then as per the leads, we are generating their job description. As per job description, we are assessing the maid and doing matchmaking between job description and maid's assessment. Then after, if the client get shortlisted, maid, then we are doing agreement with the client as well as doing the agreement with maids as well. Initially, it's for 1 year. Then after, we are doing induction and on-job training, and hand-holding support is there. So it's little bit brief about our business. If you will start in commercial, our commercial acquisition, customer acquisition cost is minimum 50 rupees and maximum 1000 rupees. We are generating revenue from registration charges from clients. We are taking 1 month salary from the client as a one-time non-refundable registration charges. We are generating registration charges from maids, as well as in subscription model, we are generating service charges from the monthly salary of the maids. Along with, we do have training. So we are having training charges as well. So we do have 3 types of franchisee: silver, gold, and platinum. Silver franchisee cost is around 3 LK. Gold franchisee total cost is around 5 LK. Platinum around 10 LK, and master is around 25 LK. About commercials, I'll briefly highlight how our franchisee can generate the revenue and earn the profit. We are giving franchise for 3 LK population. In that area, we are not giving any other franchises, so you will be whole and sole over there. We are planning, or we are expecting minimum 10 new clients from each franchisee each month. So if our franchisee partner achieve the same, we are providing the leads. That is not the issue. We are providing the leads, but our franchisee partner has to generate the maids database, then domestic staffing database from the local market, and do the matchmaking along with as per the client GD. So if our franchisee partner achieve 10 agreement per month, with 10 agreement, we are generating the total revenue of around 1,87,000, out of which these rates are variable as per the cities, because this ratio has been considered as the market of Pune. For Mumbai, it will be different. For Bangalore, it will be different. It will depend on the local market trend. But obviously, it's from 1.75 LK to 2 LK, out of which we are sharing 70% to our franchisee partner. So in this case, our franchisee partners generating the revenue of 1,31,000 per month. If I'll consider the basic expense of the franchisee in the sense of office rent, staff salary, admin charges, or marketing charges, after doing the expenses, they are getting almost 1 LK, from 80,000 to 1 LK. That is the net profit for our franchisee partner. If I'll take the same for year on year, for yearly basis, our franchisee partner can do 120 agreement, and they are getting the benefit of, they are generating the profit of 7,90,000, around 8 lakh. For 3 years, as our franchisee is for 3 years, if they maintain the same generation of the new agreements each and every year, for within 3 years, they are generating the agreements of 360, out of which they do have the capacity of earning around 23 LK. So this is basically about our commercial. You can connect with us for our franchisee from our website madeup.in. There you can find a partner with us page. On that one, you can generate your inquiry. If having any questions, you can raise the same. Thank you, Satishi. Ek to questions quickly I'll take up. One question I'm seeing is from Mr. Ravinder Singh. He's asking on the, because currently if you look at maybe the union structure, he's asking and he wants some clarity on that this model of maid provisioning may soon get maid unions in existence. Do you think this will affect any kind of functioning with respect to the model? And my second question, which I'll take, is again from one of our partners, is on the difference between or amongst the 3 models that we talked about: silver, golden, and platinum. And my third question would be on the rollout. Which locations are we looking at focusing on? Okay.
Actually, silver, gold, and platinum package are differentiate on the base of the population covered under the franchisee. For silver, we are giving the silver franchisee at district level. For metros, we are preferring platinum or golden model. For major cities also, we are preferring golden model. And rather than metros and major cities, we are preferring silver model. So it's totally depend on the population covered under your franchisee. For gold, we are covering 3 LK. For silver is 2 LK population, and for platinum is 5 LK population. As well as they are differentiate on the tenure as well. Silver model comes with 2-year franchisee tenure, then gold model with 3 years, and platinum with 5 years. Same level franchisee fees are also different. For silver level, we are taking franchisee fees 2 LK. For golden, we are having franchisee fee of 3 LK, and for platinum is 5 LK. Then about your second questions, union. See, actually, we are providing the platform for domestic staff to come under our umbrella, corporate umbrella. We are giving them chance to come under corporate, and obviously we are giving them the benefits of the corporate sector as well. So there, we don't in the last 5 years we don't find any hazard or any problem from the unions, because unions are there to take care for maids or their rights, right? And here we are offering the rights from our end. We are actually doing the same work, but they are doing on their way, and we are doing it on corporate way. We are providing the employment, and we are taking care of the working hours. We are taking care of their whatever the job description has been finalized from the client. We are giving them on timely salary, right? We are giving them yearly raise in the salary. So we are taking care of their remuneration, their working life. So we don't find any problem from the unions, right? Another question is only on the rollout हम कहाँ पे देख रहे हैं important आपके, and आपकी go to market क्या होगी to support their partners, because Pune में you are well known and you have a great business within the city. अगर कोई और market में जाते हैं तो go to market support for the franchise partner हमारा क्या रहेगा, and which cities for you are important at this point in time to be reached out to? At this point, we are looking for metros and major cities. मेजर मेट्रो सिटीज में हम लोग फर्स्ट 3 मंथ का पूरा स्टेशनरी सपोर्ट देते हैं, ट्रेनिंग सपोर्ट देते हैं. जो भी लीड्स होती है, लीड्स का 100% सपोर्ट हम लोग करते हैं सेंट्रलाइज एचओ से. ऑनलाइन लीड जनरेशन प्लेटफॉर्म जो वेरियस रहते हैं, वहां से हम लीड जनरेट करके देते हैं. एज अ फ्रेंचाइजी पार्टनर, आपको आपके लोकेशन पे मेड्स एंड डोमेस्टिक स्टाफिंग का डेटा जनरेट करना है. जो भी लीड आ रही है उनसे कोऑर्डिनेट करके उनसे जेडी कलेक्ट करना है. जेडी के हिसाब से आपको मैच मेक करना है. मैच मेकिंग के हिसाब से उनका टेलीफोनिक राउंड, देन वीडियो कॉलिंग राउंड, एंड देन आफ्टर एग्रीमेंट. ये फॉर्मेलिटी आपको करना है. उसके बाद अगेन आपको जो हम लोग के पोर्टल प्लेटफॉर्म से वहां जाके इनका 15 डेज का फीडबैक, देन मंथली अटेंडेंस कलेक्ट करना है. उसके बाद आपको जो भी छोटा मोटा ग्रीवांस वो आपके लेवल पे हैंडल होगा. मेजर ग्रीवांस वी विल हैंडल दैट. एचओ साइड से हम लोग सपोर्ट करते हैं पूरा डिजिटल ब्रांडिंग, मार्केटिंग, लीड जनरेशन, देन आपका पूरा एचआर मीन्स पूरा सैलरी पार्ट हम लोग टेकन केयर करते हैं. इवन आपके एम्प्लॉय जो लगने वाले आपके फ्रेंचाइजी लोकेशन पे एक बैक ऑफिस टीम और ऑपरेशन टीम, उनका भी हम लोग असेसमेंट करके देते हैं. यू जस्ट नीड टू कलेक्ट द डेटाबेस, जनरेट डेटाबेस फ्रॉम देयर. देन अलॉन्ग विद दिस लीगल सपोर्ट हम लोग करते हैं कि अगर कोई कस्टमर पेमेंट में कोई हिचकिचाहट कर रहा है या ग्रीवांस सीनियर लेवल पे रेज हो रहा है, इन दैट केस वी डू हैव आवर लीगल टीम, वी आर प्रोवाइडिंग लीगल सपोर्ट एज वेल. इस लेवल पे आपको खाली ऑपरेशन टेक केयर करना है. पूरा एचआर, लीगल, अकाउंटिंग, फाइनेंस, ब्रांडिंग, सेल्स, मार्केटिंग वी आर टेकिंग फ्रॉम आवर हेड ऑफिस. अभी इसमें भी एक जैसे पैंडेमिक चल रहा है, तो पैंडेमिक के इसमें भी हम लोगों का जो प्लेटफॉर्म था उसको पूरा डिजिटली एनेबल किया है. तो इफ यू गो थ्रू ऑन आवर वेबसाइट medhub.in, यू कैन सी कि वेरियस प्लेटफॉर्म पे हम लोग लीड जनरेशन एंड लीड कलेक्शन वो स्टार्ट किए हैं. इवन हम लोगों ने नया पोर्टल एक लॉन्च किया, फिर लीड मैनेजमेंट सिस्टम का. उस पर राइट फ्रॉम जो जैसे लीड जनरेट होता है वहाँ हर एक चीज़ को हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं. वहाँ से हर एक कम्युनिकेशन क्लाइंट को भी हो रहा है, फ्रेंचाइजी पार्टनर को भी हो रहा है. तो पैंडेमिक में भी हम लोगों ने थोड़ा सा मॉडल को डिजिटली और एनेबल करके लिया है.
अभी ये पैंडेमिक में हम लोगों ने ऑफर्स भी हम लोगों के फ्रेंचाइजी पार्टनर्स के लिए कुछ रखी है कि जैसे 100% फ्रेंचाइजी फीस आपको अभी देने की जरूरत नहीं. यू विल स्टार्ट योर 50% ऑफ फ्रेंचाइजी फी प्लस जीएसटी. रिमेनिंग जो भी 50% अमाउंट प्लस जीएसटी है वो हम लोग जो आपका रेवेन्यू जनरेट होने वाला है, जैसे मैंने बोला कि 70% हम लोग रेवेन्यू आपको शेयर करते हैं, तो 70% में से हम लोग आगे के टाइम में वो कलेक्ट करने वाले हैं, सो दैट वी विल नॉट गेट बर्डन ऑफ इनिशियल फंडिंग और इन्वेस्टमेंट. वो ज़्यादा लोड नहीं होगा. आप एकदम मिनिमम लेवल के इन्वेस्टमेंट पे, जैसे 3 लाख फ्रेंचाइजी फी है तो आप 1.5 LK प्लस जीएसटी पे करके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, राइट. एंड इन दिस मॉडल अगर आप कमर्शियल देखेंगे कि 10 एग्रीमेंट में अगर आप 1 लाख के तकरीबन कमाते हैं, तो ऑब्वियसली जो आपका गोल्डन के लिए 5 लाख का एक्सपेंस होने वाला था, 3 LK फ्रेंचाइजी फी एंड 2 LK और इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आपको 5 to 6 months is sufficient to achieve the break even, right? Sure, absolutely, friends. So this is a service-based model, low on investment, currently in Pune, but they're looking at penetrating in maybe top cities of India. And अगर आप interested हैं, please reach out करें. And there is some another question which I am seeing, but due to the paucity of time, I will request that we can take these questions one-to-one with our brand Satishi. And Satishi will come back to you with these feedbacks. और जो भी interested हमारे friends हैं, उनकी हम आपसे call कराएंगे, and we'll reach out to everyone who has written to us for any brand that you have seen today in the webinar. Thank you so much, Satishi, for presenting. Thanks, team. Thanks, participant. Stay home, stay safe. Corona में आप take care. Thank you so much, Satishi. Thank you so much, Satish, for joining in. Stay safe, sir. Thank you so much. And before we, invite, I think I do see Rajshekhar ji is back. Rajshekhar ji, just a quick question. अगर आप around हैं, there was a question on the menu. If we have a menu, we can share. And the other question was on the offering as such between the two models. If we can quickly take that question, अगर आप available हैं, नहीं तो हम वो भी we can do that maybe offline after the webinar. Sure. Sonia, hi. Sorry, there was a problem with my Wi-Fi. It suddenly cropped up, so I could not. I think I was not audible for part of. No, I think we'd also not been able to hear you. Correct. My request would be, Rajshekhar ji, we can get you connected one-to-one with our investors who have asked the questions. And there was a question on the menu also. अगर वो हमारे पास अभी है तो quickly हम menu दिखा सकते हैं. And I will request to maybe book a slot for one-to-one discussion with you for prospective investors. Sure. We'll do that. We'll do that. Let me just try and get to the menu part. Just give me a second, please. Just give me a second. I have just give me a second. Rajshekhar ji, my request if you can share the menu. I think there is some issue. No problem. Sure, I'll do that. हमारे साथ share कर सकते हैं. We will share with everybody who would want to reach out to. And because we don't have much of time left, I will request we can take that query offline. Ashna, can we have? I understand. Thank you so much. Thank you for the opportunity. Thank you. I'll do that. I'll share the details with Archana. Sure, please. Sure. Thank you, Sonia. Thank you, Archana. Thank you so much. Thanks, everyone. Now, the last brand in row which we are representing for each one of you is Just End, and we invite Mr. Mohan, who will be talking about what Just End is all. Just End is a complete solution for female hygiene and sanitization management. Thank you so much, Mohan sir, for joining in. Over to you. Thank you, Archana. Good afternoon to the franchisee India team, and good afternoon to all the participants.
And I take this opportunity to welcome all the participants to this meet. Just a small correction, Archana, it is not Just End, it is Just Vend. ZESTVEND. Okay, in the brochure also, I think it is mentioned as Just End. So request you to please make the corrections there. It's Just Vend, not Just End. Sure. Okay. Yeah. Sure, Mohanji will. Yeah. Thank you. So I will immediately start with sharing the presentation, and then along with the presentation, we can talk about all the things. Yeah. Basically, I'm presenting a brand which is called Zest. Zest is a brand into the field of female hygiene, sanitation, and also the hygiene waste disposal techniques. This is one of the most pertinent problems in India, particularly. It's basically a human issue, and it's a global factor. But in India, the problem is much more. And in 2013, there was a survey conducted, and the result showed that only 13% of the Indian women have gotten access to quality napkins and access and availability of the quality napkins. So that was the turning point for this entire activity. I would not rather name it as totally as a business opportunity. It's a social business. It has got a very big social impact, and I would like the people who are more interested in making themselves as socially impacted the projects. This is one of the best opportunities for those investors who are looking for a social thing to help the society, to help the social impacts. So basically, this is a franchisee opportunity for this product. I would start from. Yeah, basically, what I want to tell you is that the company is HealJust Fencon Private Limited, and HealJust is nothing but the brand owner of this company, brand owner of Just brand. HealJust is a startup registered in 2018, 2019, late 2018, early 2019. And in the last 2 years, although with all the intermittent breaks of COVID and all those things, we have been able to establish this brand all across the country. Now, Just has got its presence starting from Northeast in Tripura to Calcutta to extreme down in Kerala, in Gujarat, in Delhi, in Punjab, Rajasthan. So we can say that we are truly a pan-India company, and basically whatever we are doing it across the country through, till now we were doing it directly. Now we are looking for expanding into a franchisee model to increase our growth, to make it more feasible for all of us. So this was, as I already mentioned, this was established with an aim to provide solutions for female hygiene sanitations. इसको मैं अगर एक सिंपल वर्ड में बोलूं, क्योंकि फीमेल हाइजीन सैनिटेशन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट, वेस्ट डिस्पोजल इक्विपमेंट, all these things we can say are literally professional words and other things. इसको अगर मैं एक सिंपल वर्ड में बोलूं तो हम लोग जो बेसिकली सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं वो है सैनिटरी नैपकिन्स की अवेलेबिलिटी और उसके डिस्पोजल के लिए. तो द बेसिक प्रोडक्ट विच वी आर ऑफरिंग इज सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन for making available and accessible the quality sanitary napkins, and sanitary napkin incinerator for disposal of the used sanitary napkins. So these are the two products which we are doing it. At present, we have got already got the presence and offices in Delhi, Dehradun, Bhopal, Nagpur, Mumbai, Bangalore, Kerala, and Calcutta. These are the places we have our own offices, but we are also looking for franchises in all these places also, so that we can expand our things. Basically, as I already mentioned, that this is a social project. So the vision of the company is that to promote and provide complete solution for female hygiene with a vision to inculcate habit, thereby increase usage of quality sanitary napkins among Indian girls and women. This is one of the motives of the Government of India, and Government of India also
to increase the percentage of use of quality napkins, because the non-usage of quality napkins leads to a lot of health issues for the women in the country. And our basic area is to ensure that they can come out of all these health issues like RTI and all other issues related to unhygienic practices which is being followed in the country right now. The objective, as I mentioned, that we are making these things available through vending machines and incinerators. These are the previous products which we are offering. So as I already mentioned, this is the first one is the vending machine, sanitary napkin vending machine. Just to tell you that what is a vending machine? Vending machine is a product wherein the user can go to the machine, press the button and take a product, take a napkin from there. So this is a sanitary napkin vending machine. This also helps in eliminating the stigma and hesitation connected with this product. Because even now in 21st century, even we can take an example of metros like Delhi, Bangalore, Mumbai, anywhere. Even now also the sanitary napkins are still looked with a stigma and hesitation, because if I go to a chemist shop to buy a sanitary napkin, it is still given wrapped in a newspaper or in a black polythene, as if it is something wrong. But definitely it is a natural product, natural process, and it has to be seen in that way. So, but India has a lot of stigma attached to it, and to overcome that, we have introduced this concept of automated vending machines, which can be placed in various locations where female population are there. I will come to the type of locations where these can be used. So basically, vending machine is a product wherein the female can go to the machine, press the button, and insert the coin and take a pack of napkins, in a single napkin or pack of napkin, whatever is loaded inside. तो इस तरीके से हम नैपकिन की अवेलेबिलिटी को इंश्योर कर रहे हैं, और पर्टिकुलरली उस एरियाज में जहाँ पे की कैप्टिव लोकेशंस है, जहाँ पर की फीमेल या गर्ल्स जो हैं एक लंबे पीरियड तक के लिए रहती हैं, जैसे कि स्कूल्स हैं, गर्ल्स स्कूल्स हैं, जहाँ पे बच्चियां जो हैं वहाँ कम से कम 5 से 6 घंटे तक रहती हैं, और उस बीच में उनको जो अगर किसी क्रिटिकल प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है, क्रिटिकलिटी आती है, तो वो दे कैन जस्ट गो टू द वॉशरूम, प्रेस द एंड टेक अ नैपकिन प्रोडक्ट फ्रॉम देयर. सो दिस इज व्हाट द सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन. And you can find various other vending machines also in the market for this kind of product. But we have got a unique feature. We have got a lot of USPs, and all these USPs, features, and everything comes or derived from the experience which I, as a founder CEO of this company, had. I was working with the Ministry of Health, Government of India for quite a long time, handling the female hygiene sanitation project. Also, I was working with various US companies into the vending industry. So with all those the experience which I had in vending and female hygiene segment, I had thought of introducing a product which is totally different from the market, which is available in the market. Just to give an example of why it is different, most of the vending machines in the market, as you know that vending machine में एक limited capacity होती है, जिसको हर बार भरना पड़ता है. अगर हमने उसमें 50 नैपकिन भर दिए हैं और 50 फीमेल ने आके उसमें बटन प्रेस करके प्रोडक्ट निकाल लिया, तो वो खाली हो जाता है. उसके बाद किसी को उसको जाके भरना पड़ता है, एंड द केयर टेकर इज सपोज टू डू दैट. लेकिन नॉर्मली इस गवर्नमेंट लोकेशंस में जहाँ पे हम इसको प्रमोट कर रहे हैं, वहाँ पे ये होता नहीं है और मशीनें खाली पड़ी रहती हैं, जिसकी वजह से मशीनें यूज नहीं आती हैं. तो हमने जो इन मशीनों में किया है कि ऑल दिस मशीन्स आर ऑनलाइन कनेक्टेड और कैन बी कनेक्टेड टू मोर देन वन पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने स्कूल में मशीन लगाया तो हम एक तो वहाँ के केयर टेकर को कनेक्ट कर देते हैं, एक प्रिंसिपल को कनेक्ट कर देते हैं, एक जो भी उसका फंडिंग डिपार्टमेंट है उनको कनेक्ट कर देते हैं, और एक हमारा कस्टमर केयर डिपार्टमेंट होता है, जिससे कि हम ये इंश्योर करते हैं कि मशीन को टाइमली रिफिल किया जा सके और फीमेल कैन गेट देयर प्रोडक्ट एज एंड व्हेन दे रिक्वायर, बिकॉज दिस इज द नेसेसिटी आइटम. एंड इफ वी इनकलकेटेड हैबिट इन द वुमेन दैट कि आपके लिए प्रोडक्ट नैपकिन्स अवेलेबल है आपके ऑफिस में, आपके स्कूल में, and at the time of emergency if they don't get it, this will be a very difficult situation for that female. तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने ये इंश्योर किया है कि नैपकिन्स हमेशा इसमें अवेलेबल रहते हैं, एंड दिस इज द यूनिकनेस ऑफ माय प्रोडक्ट. द सेकंड प्रोडक्ट जो है इसमें वो है सैनिटरी नैपकिन इंसिनरेटर. ये सैनिटरी नैपकिन्स को, यूज्ड सैनिटरी नैपकिन्स को डिस्पोज करने के लिए यूज किया जाता है. दिस इज वन ऑफ द आई कैन से बिगर चैलेंज देन द अवेलेबिलिटी. अवेलेबिलिटी को तो हम फिर भी कई तरीके से एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन डिस्पोजल के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है. If we for a second if we just forget about incinerator, then what are the options available for these females?
only two. Either throw it in the dustbin, which again goes into the open and then handled by various people, wherein because of the bio-waste in that, there will be a lot of bacteria formation, and which leads to health hazards for the surrounding people, for the animals if it is thrown into open and all those things. And the second option is to just to put it into the toilet commode, and which leads to blockage quite often, and leads to a lot of problems in removing all those things. इन दो के अलावा तीसरा ऑप्शन नहीं था अभी तक. तो उसके लिए जो incinerators डेवलप किए हैं, we install these incinerators inside the toilets only, inside the female toilets, wherein female can change the napkins and put in the used napkins directly into the vending machines, into the incinerators. और हम इस incinerators में इसको हम जला के ash में convert कर देते हैं, so that there is no health hazard, there is no handling by any other person. It simply gets burned and converted into. It's just like any other. जैसे आपने कोई injection लगवाया है, कोई needle है, तो needle has to be incinerated, needle has to be burnt immediately. So this is something like that. The same thing, that it has to be burnt and converted into ash. And again, here also we have got unique features like auto start, and also the treatment of flue gases at 950 degree. And we are the only one with these two products in the market, which is this thing. So again, we have got various USPs, we have got various plus points, which are keeping us on the top of the ladder right now. In addition to that, we have also developed the mini incinerators to cater to the smaller locations. And the fourth one, which is there in the combo machine, is a unique product developed by me. Till now in India, both the vending machine and incinerators are separate units, but ultimately these are meant for the same type of locations. For example, अगर हमें गर्ल्स स्कूल में लगाना है, गर्ल्स हॉस्टल में लगाना है, कॉर्पोरेट ऑफिसेस में लगाना है, वहाँ पे दोनों मशीनों की जरूरत पड़ती है, एक वेंडिंग मशीन की भी और एक इंसिनेटर की भी. Then the question comes is, why we need two machines? Why can't we incorporate both the things into one machine? And we have developed a combo machine, and we have got a patent in our name. So it's a patented product in the name of Jest, that in one single machine we can have the new disposal of the used napkins, and also dispensing of the new napkins from the same machine. This has also got various unique features like online connectivity, sensor-based connections, auto start. All those features are there in these machines. All these are electronic machines, although we have introduced the low-cost manual machines also, but that is only for the locations where there's a problem of electricity or supply of or the budget or something like that. For that, we have introduced the low-cost machines also. Now we are registered with the government electronic market. We are an ISO certified company. We are MSME registered. We are a DIBP registered startup. So all those government recognitions are there with us. This is some of the few credentials which we already had in this short span of 1.5 to 2 years. We are working with Samsung for their CSR project in installing these machines in Bangalore schools. We have installed these machines with Department of Post in Bangalore. We have worked with Bharat Petroleum. We have worked with ONGC. We have worked with Dollar Industries. All these companies provide their CSR funds to us, and we install these machines in government schools for the benefit of the girls studying in that. इसमें एक और एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि why we focus into the government schools. Basically, there is a survey and established fact that when the girls enter into the puberty stage, there's a dropout to the extent of 28%. जैसे ही वो स्टेज में आती है, बच्चियों को एक fear factor आ जाता है, जिसकी वजह से वो particularly in villages and the tier 3 and tier 4 cities, वहाँ पे dropouts हो जाते हैं, and the survey says that 28% of the girls drop out. That means practically this is not only a health issue, this is also an educational issue, because they are not getting educated just because of this issue. So we are also addressing through the health issue the other issues of regarding the women empowerment also. So these are the things which we have already done it. And now coming to the market opportunity, this is just the kind of locations and the kind of potential which we have. In India, we have got close to around 365 million menstruating women in India right now. So you can understand the potential of that. And definitely the working women are going to be the target for us. The girls who are studying in those schools and the working women who spend a lot of time out of their home are going to be our basic potentials. So the type of institution, कहाँ पे ये मशीनें लग सकती हैं.
स्कूल्स में किसी भी टाइप का स्कूल्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, पंचायत स्कूल हो, जहाँ पे कि गर्ल्स और बच्चियां पढ़ती हैं, उस टाइप के स्कूल्स में लगाई जा सकती हैं। आंगनवाड़ी जो कि प्राइमरीली महिलाओं के लिए ही बनाई जाती हैं, वहाँ पे लगाई जा सकती है। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, कोचिंग क्लासेस, गर्ल्स हॉस्टल्स, skill development centers, offices, any type of office where we can say 5 or more female employees are there, these can be put in there. And then we have got a lot of community locations like bus station, railway stations, and also this community centers, slum areas, these areas where we can install, and the list is endless. We have enormous type of opportunities for installing this type of machine. This is the kind of growth which we have in the female hygiene product market, particularly for the napkins and other things. This is why this industry is growing. कि किस वजह से हमें इसकी जरूरत पड़ रही है। एक तो इंक्रीजिंग डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है, रेट ऑफ अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आउट ऑफ होम वुमेन का परसेंटेज बढ़ रहा है, which is again related to the next point of increasing working women. Lot of government initiatives. ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस बिजनेस को समझने के लिए, जिसको मैं आगे अपने मार्केट सेगमेंट में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा मैं। और इसके अलावा जो राइजिंग कंज्यूमर अवेयरनेस है, जो यूजर्स को जो अवेयरनेस बढ़ रहा है कि इसके ना यूज करने से, क्वालिटी नैपकिन्स ना यूज करने से किस तरीके के हेल्थ हजार्ड्स होते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इस बिजनेस को ड्राइव करता है। These are the industry overviews, कितना पोटेंशियल है, क्या है। Now coming to the winning strategies and the marketing segments. अगर हम इसमें ये देखें कि हम क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी हमारे पास इस तरीके की टीम है जिन्होंने 8000 से ज्यादा वेंडिंग मशीनें लगा दी हैं। हमारी खुद के जस्ट की ब्रांड की more than 1500 machines are operational in the market. So that is one of the unique things, USPs, हमारे जो प्रोडक्ट्स के जो USPs हैं, हमारी जो एक्सपीरियंस टीम है, ये हमारे लिए एक वैल्यू एडिशन देते हैं हम फ्रेंचाइजीज को और टू द एंड कस्टमर्स ऑल्सो। और इस वैल्यू एडिशन के साथ जब मार्केट में जाते हैं तो एक जो लिमिटेड अवेयरनेस है लोगों में, उसको ओवरकम करने के लिए बहुत अच्छा पोटेंशियल है। इस प्रोडक्ट के लिए अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी और कई तरीके के मिथ्स जो हैं, इनको ओवरकम करते हुए हमें काफी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि हम इस बिजनेस को और सोशल एक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकें। अब हम इसमें अगर मार्केटिंग सेगमेंट की बात करें तो मार्केटिंग सेगमेंट हम बेसिकली इसमें 3 तरीके का देखते हैं। और इसमें मैं जो फ्रेंचाइजी एसोसिएशन देख रहा हूँ, वो बेसिकली उन लोगों के साथ में को देख रहा हूँ जो बिजनेस टू बिजनेस या इंस्टीट्यूशनल बिजनेस में ज्यादा काम कर रहे हैं, बिकॉज ये एक प्रैक्टिकली रिटेल बिजनेस नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशनल बिजनेस है। और व्हेन वी टॉक अबाउट इंस्टीट्यूशनल बिजनेस, इसका एक बहुत बड़ा मेजर चंक जो है गवर्नमेंट बिजनेस है। और गवर्नमेंट बिजनेस किसी भी तरीके के लोकेशंस में हो सकता है। अगर आप एक छोटी सी सिटी में भी हैं तो वहां पे भी आपके यहाँ पे ग्राम पंचायत होगा, ब्लॉक पंचायत होगा, कई तरीके के गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होंगे, वहां पे बस स्टैंड होगा, वहां पे कम्युनिटी सेंटर्स होंगे, आंगनवाड़ीज होंगे। तो इस तरीके के एक छोटी सी सिटी में भी उतना ही पोटेंशियल है जितना कि एक बड़ी सिटी में है। तो गवर्नमेंट बिजनेस एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। तो हमारा जो मार्केटिंग का जो पहला सेगमेंट आता है वो आता है गवर्नमेंट सेगमेंट। और इस गवर्नमेंट सेगमेंट में ग्राम पंचायत से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट तक हर डिपार्टमेंट में कई तरीके के अपॉर्चुनिटीज, पॉलिसीज, स्कीम है। और गवर्नमेंट जो है हर लेवल पे इस पे फोकस कर रहा है वुमेन हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट is now the buzzword for any type of government, whether it is for political reasons or whatever is there. Women empowerment is the buzzword, and we are one of the parties which is helping in women empowerment in the country. तो इस तरीके से हम गवर्नमेंट में, अगर हम गवर्नमेंट में किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ पे महिला बाल विकास, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, पंचायती राज डिपार्टमेंट, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इस तरीके से हर लेवल पे, चाहे वो सेंट्रल लेवल हो, चाहे स्टेट लेवल हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, चाहे ग्राम लेवल, विलेज लेवल हो, हर लेवल पे इतनी अपॉर्चुनिटी से इतने सेक्शंस हैं, इतने डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे इन चीजों को प्रमोट किया जा सकता है। तो एक जो सबसे बड़ा सेगमेंट है हमारा वो रहता है गवर्नमेंट सेगमेंट, जहाँ पे कि हम बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं ऑलरेडी और इसको ग्रो करना चाह रहे हैं फ्रेंचाइजीज के थ्रू। एक दूसरा जो सेगमेंट होता है वो होता है CSR का, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में अप्रूव्ड प्रोडक्ट हैं
और अगर आप कोई फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपके एरिया में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी कंपनीज हैं जो कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी से, उनको मैंडेटरी है कि वो अपना 2% जो है अपना CSR में उनको इन्वेस्ट करना ही पड़ता है, और वो हमारे लिए एक पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। जैसे जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि ONGC हुआ या सैमसंग हुआ, वहां पे हमने उनको ये बोला कि आपका जो CSR का जो फंड है वो क्यों ना आप इसमें आप बच्चियों के, स्कूल के बच्चियों के फायदे के लिए इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी, और उस चीज को पूरा करने के लिए हमारा प्रोडक्ट आपके साथ में जेल करता है। तो इस तरीके से फॉर एग्जांपल अगर जैसे हम एक छोटी सी सिटी का नाम ले लें, जैसे जबलपुर इन मध्य प्रदेश या ऐसा कोई सिटी ले लें, तो उसके इन एंड अराउंड जितने भी सीमेंट इंडस्ट्रीज है, सतना, मैहर, वहाँ पे जितने भी सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं वो, और 2 साल पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, और उनको CSR में ये प्रोडक्ट हम प्रपोज कर सकते हैं कि आप अपने एरिया के जितने भी गर्ल्स स्कूल्स हैं वहाँ पे ये इन मशीनों को लगवाइएगा, तो वो हमें फंडिंग वहां से मिल जाती है और हम मशीनों को लगाते हैं। तो दूसरा जो बड़ा सेगमेंट है, और CSR सेगमेंट भी उतना ही बड़ा है जितना गवर्नमेंट का फोकस है। गवर्नमेंट के फंड्स बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन उतना ही फंड CSR में भी अवेलेबल है। अगर हम खाली एक सेगमेंट, पेट्रोलियम सेगमेंट की बात करें, तो स्टार्टिंग फ्रॉम ONGC, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इन सबको मिला के अगर देखें तो 1000 करोड़ तो इनके पास खाली CSR के फंड रहते हैं। तो इस तरीके से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, सेकंड मार्केटिंग सेगमेंट जो CSR होता है। इसके लिए हमें कॉर्पोरेट्स, कंपनीज को अप्रोच करना है, और हम हमारे जो एसोसिएट्स होंगे, फ्रेंचाइजीज होंगे, उनसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि लोकल एरिया में ऐसे करें, क्योंकि हम सेंट्रल लेवल पे बैठ के या स्टेट लेवल पे बैठ के हम खाली बड़ी कंपनियों को अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर इतनी कंपनीज हैं जो कि प्रॉफिट मेकिंग है और जिनको CSR इन्वेस्ट करना कंपलसरी है, हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो उन तक पहुंचने का एक जरिया और माध्यम बनाना चाहते हैं आप फ्रेंचाइजीज को, जिसके थ्रू हम एक्सपेंड कर सकें। इसके अलावा जो तीसरा सेगमेंट आता है वो जिसको हमने नाम दे रखा है रिटेल का, बट ये रिटेल नहीं है, ये हो जाता है प्राइवेट सेगमेंट। जिस तरीके के, जैसे आपके एरिया में कोई भी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे प्राइवेट कॉलेजेस हो, या प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हो, इस तरीके के जितने भी हैं जहाँ पे की बच्चियां आती हैं, गर्ल्स आते हैं, वहाँ पे एक बहुत अच्छा पोटेंशियल होता है। तो वहाँ पे जाके, यहाँ पे वो पहला 2 जो सेगमेंट बताया है, वहाँ पे हमेशा हमें वॉल्यूम्स अच्छे मिलते हैं। जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, पंचायत से अगर हमें कोई एक अच्छा ऑर्डर मिलता है तो मिनिमम 50 मशीन का मिलता है, 100 मशीन का मिलता है, 500 मशीन का मिलता है। इसी तरीके से CSR में अगर हम किसी से बात करते हैं तो वो कभी भी 1 मशीन लेके खरीद के नहीं लगाता है, वो ये कहता है ठीक है ये 10 स्कूलों में आप मशीन लगा दो। तो वो दोनों सेगमेंट हमारे लिए बल्क सेगमेंट्स होते हैं। और तीसरे को हमने इसलिए रिटेल नाम दिया है कि यहाँ पे कई बार ऑर्डर्स जो हैं वो सिंगल या डबल्स में, छोटी क्वांटिटीज में आते हैं। जैसे आप किसी एक स्कूल में जाएंगे जहाँ पे 500 बच्चियां हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आपसे 2 मशीनें लेगा, उससे ज्यादा उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। तो उस तरीके का जो तीसरा सेगमेंट है, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत जरूरत पड़ती है इन चीजों की, क्योंकि वहाँ पे जितने भी अटेंडेंट्स होते हैं, जितने भी OPD पेशेंट्स होते हैं, उनको कब इमरजेंसी में जरूरत पड़े, उनके लिए कब चाहिए, उनको लगाना पड़ता है, उनको जरूरत पड़ती है इसकी। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। और इसके अलावा इसमें रिटेल सेगमेंट में एक बहुत बड़ा सेगमेंट है कॉर्पोरेट ऑफिसेस। आपके एरिया में कोई भी ऑफिस जहाँ पे कि 5 या 5 से ज्यादा महिलाएं काम कर रही है, हमारे लिए एक पोटेंशियल कस्टमर है। क्योंकि आज के डेट में किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिसेस को या कंपनी को अपने एम्प्लॉयज को, चाहे वो किसी भी तरीके का एम्प्लॉय हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करना एक नॉर्म है, एक जरूरी है कि आप अपने एम्प्लॉयज को, जैसे जिस तरीके से आप टॉयलेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिस तरीके से आप पीने के पानी का फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उसी तरीके से महिलाओं को नैपकिन प्रोवाइड करना भी एक नॉर्म है आज की डेट में, कि आप अगर 5 या 5 से ज्यादा महिलाएं हैं तो वहाँ पे आपको नैपकिन की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो वो भी हमारा एक पोटेंशियल कस्टमर हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे 3 सेगमेंट हैं, गवर्नमेंट, कंपनी CSR एंड देन द प्राइवेट रिटेल। अब हम बिजनेस मॉडल की बात करें कि हम किस तरीके से एसोसिएट होना चाह रहे हैं। बेसिकली हम 2 लेवल पे हम फ्रेंचाइजी और एसोसिएट चाह रहे हैं, एसोसिएशन चाह रहे हैं। एक तो है एरिया फ्रेंचाइजी। एरिया फ्रेंचाइजी हम उस तरीके से देख रहे हैं जो एक बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को हैंडल कर सके। फॉर एग्जांपल, इफ यू टॉक अबाउट a state, there can be 1 or 2 franchisees handling the entire state, whereas that franchisee will be entitled to appoint business associates below them
And in each and every district or each more than one associate in a district is also possible. We can do it at a block level because opportunities उस level तक है, ग्राम पंचायत तक opportunity है. So that's the reason we are trying to develop a two-tier structure wherein area franchisee will be there and below them there will be business associates will be there. ये इसके फाइनेंशियल्स हैं. बेसिकली हम एरिया फ्रेंचाइजी से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है 8 लाख का इन्वेस्टमेंट, जिसमें 3 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है जो रिफंडेबल होता है, और 5 लाख रुपए जो है उसके अगेंस्ट में हम स्टॉक देते हैं. और उन स्टॉक को हमें इस तरीके से यूज करना है कि जैसे कई बार क्या होता है, जैसे आप किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाके आप वहाँ बात करते हैं कि आपके 300 स्कूल हैं, 300 स्कूल में इस प्रोजेक्ट को लगाना है, तो उनका पहला रिक्वायरमेंट होता है कि आप प्रोडक्ट क्या है पहले आप बताइएगा. तो वहाँ पे प्रोडक्ट का डिमॉन्स्ट्रेशन देना पड़ता है. ये छोटी मशीन्स होती हैं, इट कैन बी कैरिड इन 2-wheeler बाइक और इवन इन कार ऑल्सो. वहाँ पे ले जाके हम प्रोडक्ट का डेमो दिखाते हैं जिससे कि उनको कॉन्सेप्ट समझ में आता है, उसके फीचर समझ में आते हैं. तो इन तरीके के रिक्वायरमेंट्स के लिए हम एक छोटा सा हर एक मॉडल का एक इनिशियल स्टॉक देते हैं जिसकी कॉस्ट होती है 5 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली. ये मिक्स ऑफ द मॉडल ये एरिया के हिसाब से डिवाइड करता है कि वेंडिंग मशीन ज्यादा रखना है, इंसिनेटर ज्यादा रखना है या छोटे वाले मॉडल से ज्यादा रखना है. वो हम एरिया के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि वहां पे किस तरीके का पोटेंशियल है. तो टोटल 8 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है और इसमें जो है एरिया फ्रेंचाइजी को हम इस तरह ऑथराइज करते हैं कि दे कैन अपॉइंट बिजनेस एसोसिएट्स. अगर हम ये बोलते हैं कि एक फ्रेंचाइजी अगर 10 बिजनेस एसोसिएट का अपॉइंट करता है तो उनको जो भी बिजनेस एसोसिएट डेवलपमेंट के जो भी खर्चे होते हैं वो हैं, उसके लिए वो अपने बिजनेस एसोसिएट से 50,000 रुपए अपना फ्रेंचाइजी फीस ले सकता है और इस तरीके से वो उसको अपॉइंट करके अपना टोटल जो एक्सपेंसेस जो है उसको मीट आउट करता है. फ्रेंचाइजी एरिया फ्रेंचाइजी के लिए जो ROI है वो 8 से 10 महीने का होता है, अराउंड 150% तक जाता है. और बिजनेस एसोसिएट्स के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो रफली अराउंड 1.5 लाख है, क्योंकि बिजनेस एसोसिएट एक बहुत छोटे एरिया को कैटर करता है. तो उसके लिए 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है और परसेंटेज जो है करीब 35% का मार्जिन उनको मिलता है और एरिया फ्रेंचाइजीज को उसमें और 10 से 12% एक्स्ट्रा मार्जिन मिलता है. इवन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी देखें तो एरिया फ्रेंचाइजी जो होता है वो मशीनों की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है मशीन सेल्स के बाद, और बिजनेस एसोसिएट्स खाली सेल्स हैंडल करता है. सर्विसेज जो प्रोवाइड करनी है वो एरिया फ्रेंचाइजी करता है. इन सारे चीजों के लिए ये हमारी तरफ से जो सपोर्ट रहता है वो ये रहता है कि हम हर चीज की ट्रेनिंग देंगे, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देंगे, सर्विसेज की ट्रेनिंग देंगे, मार्केटिंग की ट्रेनिंग देंगे, मार्केटिंग कोलेटरल्स प्रोवाइड करेंगे, किसी तरीके का एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन, इवेंट्स अगर वगैरह कुछ करने हो तो वो करेंगे. We also do into a lot of spend into R&D and product development. We also spend into the supply chain management and SCM and SRM, CRM and other things. We also provide that. So this is the support which we provide for that. So basically now these are the details about the product. I will not go into that. So this is all about this. So if any one of you haven't got any questions, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं उसको. Yeah. Hello. Hello. So thank you. Yeah, thank you so much, sir, for presentation. We'll come back to you for one-to-one query with our investors. Sure, not a problem. Thank you so much. If any details are required by any investor, you can just let me know. Sure. We'll definitely do it, sir. So thank you so much, everyone who has joined us today for our detailed presentation on each and every brand which we have presented. You wanted to have more clarity, more information on these brands, please do reach out to us at our business hotline number, which is 97176-83838. Save this number in your phone book so that you get a regular updates from our side. Also join us at the different social handles, information on your screen. Do share your suggestion and feedback with us. Also join Gaurav sir and Sonia ma'am at their respective LinkedIn IDs, information on your screen. And we want to invite you for our Kolkata chapter, which will start at 7 p.m. where our objective is to bring top 5 business opportunity for you under this particular chapter. And tomorrow,
under 329th Business Opportunity Over Chai webinar series, we invite you to join us for brand which is no name for furniture under furniture vertical. Aerophase is the brand we are bringing for you tomorrow. So do registration today for both the invitation 7 p.m. as well as 12 p.m. Thank you so much once again for joining in today. Have a great day ahead. Thank you so much. Stay safe.